तो नमस्कार देवियों और सज्जनों। तो भाई जैसे कि हमारी रीत बनी आ रही है काफ़ी टाइम से कि हम लाइव स्ट्रीम करने आ जाते हैं जब भी रात का अंधेरा होता है। तो अंधेरा कायम का जैसे ही लाइक डायलॉग सुनाई देता है कि अंधेरा कायम रहे और हम लाइव स्ट्रीम करने के लिए आ जाते हैं। तो आज भी वही दिन है कि जब हम अगेन आफ्टर अ वीक आई एम लाइव स्ट्रीमिंग फॉर यू ऑल। तो भाई सबसे पहले जो चीज़ हम करते हैं वो चीज़ कर देते हैं। होपफुली हमेशा की तरह दर्शक हमारे साथ फिर जुड़ेंगे, हमारे मित्रगण, हमारे भाईगण। तो भाई सबसे पहले हमारे डिस्कॉर्ड वासियों को हम लोग इनवाइट कर देते हैं। इंसान रोर भाई, आप हो क्या भाई? नाम चेंज कर दिया भाई मैंने आपको, मॉडरेटर कब बना दिया भाई? आप हो कौन है? कोई तो पुराना बंदा है जो आया हुआ है और जिसने अपना नाम चेंज कर लिया है। होपफुली इट्स नॉट द नीडर। Romance Sony bro, check Microsoft Flight Simulator here. Bro, I don't have Microsoft Flight Simulator installed on my system. The main reason that is uh, behind that is that Flight Simulator have around like 150 GB of download before it starts, and it is in-game download, which is causing me a lot of error. So that's the issue. क्रिकेट 22 खेलो भाई, क्रिकेट 22 पड़ा हुआ है लेकिन उसको भाई कोई नहीं देखना चाहता है। तो क्रिकेट 22 तो आज के लिए हम नहीं खेलेंगे। और भाई हम सबको भाई एटलीस्ट पहले मुझे मेरे डिस्कॉर्ड वासियों को बुला लें, तो फिर हम स्पाइडर मैन रीमास्टर्ड के साथ स्टार्टिंग करेंगे। एवरीवन प्लीज ज्वाइन इन द लाइव स्ट्रीम, ज्वाइन इन द लाइव स्ट्रीम। जैसे कि भाई हमारे डिस्कॉर्ड वासी हैं, हमारे डिस्कॉर्ड निवासी हैं। भाई पबजी पबजी खेलो भाई, रोमा भाई पबजी भी इंस्टॉल नहीं है यार सिस्टम पे भाई। मतलब डिफरेंट ही टेंजेंट की दिक्कतें चला रही हैं हमारे साथ अभी। पबजी इसलिए इंस्टॉल नहीं कर, स्पेस नहीं है भाई। सबसे बड़ा इशू क्या है पता है? सबसे बड़ा इशू है इस लैपटॉप के साथ, 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क के साथ, कि आई डोंट हैव इनफ स्पेस। ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हो स्ट्रीम पे मेरे को। ओ भाई सो दैट्स भाई लाइक WNF गेमिंग से थोड़ा थोड़ा तो याद आया, लेकिन भाई दैट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम कि 1 साल बाद आप आ रहे हो। इट्स सो गुड टू सी यू भाई। जब भी कोई हमारा भाई पुराना समर्थक, पुराना सपोर्टर, पुराना भाई हमारे साथ जुड़ता है, दैट ऑलवेज मेक्स मी एक्सट्रीमली हैप्पी कि भाई आप सभी लोग यहाँ पे आज भी हो। यू स्टिल रिमेंबर माई चैनल एंड यू स्टिल आर वॉचिंग माई चैनल। सो इट ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी। तो गाइज जस्ट गिव मी अ मिनट। बस मैं जो देख स्पाइडरमैन चालू हो चुका है हमारा बैकग्राउंड में, होपफुली। चलो भाई स्क्रीन पे भी आ चुका है विदाउट एनी इश्यूज। रोमान सोनी ब्रो, इट कॉस्टेड मी अराउंड, ओके भाई देयर इज नो ऑडियो, लाइक इट कॉस्टेड मी अराउंड 1,43,000 for the 2022 model with the 1440p display and RTX 3060 140 board. I seriously don't know why there ain't any audio. Give me a minute. Why can't I hear anything? अरे भाई इवन टेक्सटेड इंस्टाग्राम पे याद है मैंने बताया कि आई एम गोइंग टू अमेरिका। या नाउ नहीं, लाइक आई रिमेंबर यू, बट भाई लाइक क्योंकि बहुत समय से भी हैवंट बीन इन कांटेक्ट भाई, लाइक उतनी ज़्यादा मेमोरीज नहीं है। अमेरिका का तो आपने बताया, उससे तो मुझे याद आ गया, कुछ कुछ चीज़ें याद आ गई। अमेरिका का मुझे याद है कन्वर्सेशन कि आपने बताया था कि यू आर गोइंग टू अमेरिका। तो भाई आप अमेरिका में ही हो अभी? और वेयर आर यू राइट नाउ? तो भाई गाइस वी गोना ट्राई दिस गेम आउट विद वेरी हाई सेटिंग्स एंड भाई रे ट्रेसिंग ऑफ रहेगी और हमारा DLSS, क्योंकि FSR इस गेम में भाई बिल्कुल भी सही काम नहीं करता है। तो हम लोग DLSS को ट्राई करेंगे भाई क्वालिटी पे। और भाई मैं बहुत मस्त हूँ भाई, होपफुली आप भी बहुत अच्छे होंगे भाई। मैं बस लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, उसको एंजॉय कर रहा हूँ भाई। आखिरी कुछ समय से भाई लाइव स्ट्रीम्स हैव बीन डूइंग एक्सट्रीमली अमेजिंग। तो भाई उसको भी भाई मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ कुछ टाइम से, कि भाई काफ़ी ज़्यादा लोग कनेक्ट करते हैं। दे आर हियर टू आस्क द क्वेश्चन, दे आर हियर टू लाइक दे कम अप हियर विथ सम क्वेश्चंस फॉर विच दे वांट आंसर फॉर। तो भाई का 4 डेज में वेकेशन खत्म हो रहा। ओ भाई लाइक यू नो गोइंग टू अमेरिका इज़ वन ऑफ माई ड्रीम्स। लाइक आई रियली वॉन्टेड टू डू एन MS फ्रॉम देयर, बट क्योंकि भाई कोविड हैपेंड एंड देन सडनली माई प्लान्स चेंज। तो भाई ये सिनारियो है।
And guys, देखो, guys, the only thing that I will say about Spider-Man is that there are some FPS drops while we are swinging through the city. Uh, like the GPU utilization goes like a lot up and down, especially when we are swinging across. तो भाई तो उसका थोड़ा सा इशू है. But apart from that, this game is like really perfect. निशांत भाई बिल्कुल बढ़िया है भाई. आप कैसे हो भाई? क्या चल रहा है भाई? क्या हो रहा है आप सभी लोगों का? हाउ वाज भाई रक्षाबंधन फॉर यू ऑल? कल इंडिपेंडेंस डे है भाई, तो सब लोगों का लॉन्ग वीकेंड रहा है. इवन इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट और अ स्कूल स्टूडेंट और यू आर डूइंग अ जॉब. हाँ भाई, इंसीरोर या भाई मैंने लैपटॉप चेंज कर लिया. मेरे पास 2021 वाला मॉडल था. देन क्योंकि आई रियली वांट टू रिमेन रेलेवेंट ऑन यूट्यूब, आई थॉट लाइक लेट्स बाय Asus TUF A15 2022 मॉडल. तो मैंने 140 बॉट RTX 3060 वाला भाई खरीद लिया भाई. एंड भाई एक्चुअली ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन मैन. And Rico Bauman bro, as of this moment, Rico Bauman, like since I have a lot of games installed on my system, I will just show you the games, that number of games that I have on my system. I don't have any space to install Warzone. I even bought that game Modern Warfare 2019. I should look for more towers to activate. 2019, like a month back. And with that game, the download, like the space that Warzone takes is around 160 GB, and I seriously I don't have that kind of space with all the games installed on my system, and hence I don't have it as of this moment. But brother, you are a prestigious member of this channel, and if need to be, I will just create a video that I will just enable for the people who have the membership of the channel, and I will definitely show you the performance of that game on this laptop. So just don't worry about it. If need to be, I will even do a personal live stream for you, brother. Just don't even think about it. Like I will do anything that I can do. NC bro. The thing is that the temperatures of TUF are still going around 90 degrees. The main change being this year, if the wattage of 6800H remains around 20 watts, when CPU gets utilized for around 140 watts. So what happens, the CPU just remains around 20 to 22 watts, and the temperature remains around 73 degrees, that you can see. So that's the case currently. Since we have enabled the DLSS, the game is not able to utilize the GPU fully, and they are prioritizing There's the stage entrance. I will be. अच्छा भाई, इंसिडोर भाई, आप एक्जॉन भाई से बात कर रहे थे. I thought you were talking to me. Sounds like a lot of people out there. You'll be fine, honey. So even TUF reaches 90 degree. Even this year TUF reaches 90 degree. Yeah bro, I'm playing on 1440p, very high settings with DLSS set to quality. Rico Brahman, I will just show you the settings in a minute. You got this, Dad. No issues, Rico bro. That makes you an official superhero. I really want to help you out with whatever I can, and especially since you are a prestigious member of our channel, I would do anything to help you out, and to help anyone else out as well, bro. It's my duty to help you all out. That's why you are all here, भाई. जाना है होगा, बुरा लग रहा है, पर अरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं निशांत भाई. I totally understand. कल भाई 15 अगस्त है, तो you have to go to your schools early in the morning, so I can totally understand it. I think this gang war may finally be over. Like over? ओ भाई एक्सजॉन भाई का अच्छा इशू हो रहा है भाई. Still to be tied up, but Loose ends. भाई वरिंग साइन ऐसा कुछ नहीं है भाई, लेकिन truck pulled away from the scene from a company called. एक्सजॉन भाई, एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू यू टू निशांत भाई. एंड भाई वरिंग साइन तो नहीं है, बट थर्मल पेस्ट चेंज कराओ भाई एक्सजॉन भाई. इट विल हेल्प यू आउट. Grab some coffee. भाई यो मैन यो Yo Toro Buck brother, how are you brother? I am fine. And how was your Rakshabandhan Toro Buck man? We all know that Officer Dave. Yeah, sometime when Axion joins and Toro Buck is end there, and when Toro Buck is here, Axion is not there. And thank you so much for the 80 man. Rico Bauman bro, thank you so much for the donation. It really means a lot to me. Thank you so much. We could. And I'm really humbled with your gesture. You already took the membership, and now you have given me a super chat. So thank you so much for that. It's gonna help me out a lot. Very brave.
above and beyond. Yeah, man, like in zero, bhai, like a lot has changed since last, like in last, Officer Jefferson Davis. in last year or so, and like my channel have been growing a lot faster, and I can't be thankful enough to you all for all that you have done for me. Thank you so much for that, guys. Musty Biscuit, hi bro, thank you so much for joining in, man. Ryzen 5 5600X, you are talking about desktop augmented, like it's a great I share this honor with great CPU without a doubt. my wife Rio. भाई को राखी बांध दी Without their support, भाई टोरवा के बताएगा भाई. I couldn't do what I do. Yes. I've worked Just give me a minute, Rico. I will just try to help you out. over the coming days. Your company, your city, and everything you care about will be destroyed. Just give me a minute. People will beg you for help, but you won't be able to save them. Listen, jackass. I get threats like this twice a week. Why don't Okay. you grow a pair and tell me what you want? To watch you suffer. Okay. So this was the ceremony. That was going around. Like, so up till now I have been able to see see all the cutscenes and have been able to like understand what is going on in the game. Oh my god. This is pretty awesome. Like, भाई सक्षम भाई एक नंबर भाई, आप कैसे हो ब्रो? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग है सक्षम भाई. Just a cutscene end and then I will try to answer all your questions, guys. Just wait for a minute. And Deva bro, RTX is off as of this moment. I am playing on very high settings, 1440p with DLSS set to quality. As soon as this cutscene ends, I will definitely answer you all. Oh my god. अब स्पाइडरमैन इज लाइक सीरियसली इंजर्ड. भाई रक्षाबंधन सक्षम भाई आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड भाई आपकी साइड से कुछ फोटो तो नहीं दिख पाए इस बार. मैं लाइक हर बार फोटो डालते थे, अब इस बार आई डोंट नो क्यों नहीं आई आपके एंड से फोटोज. सक्षम भाई दीदी के साथ इस बार आप दीदी के पास पहुंचे नहीं या फिर भाई इस बार फोटो डालने का मन नहीं हुआ? एंड रिचो बामिन ब्रो, आई विल जस्ट आंसर योर क्वेरी ब्रो, डेफिनेटली. जस्ट as soon as this cutscene ends, I will answer your question first. So this is Miles Morales. His father just died in that bomb blast. Okay, so guys, I will just answer the queries. So Rico Bamin bro, like you can see some of my other videos where you can see like especially at 1440p where when you are playing a like extremely GPU like intensive game, you can see that thermals of this laptop have been really improved if that's the case when CPU is not under like the max load. So in that case the CPU remains around 73 to 74 degrees and GPU maximum goes around to 83 or 84 degrees or 85 degrees sometimes when my room temperature is around 30 degrees. So then in that case that GPU can reach around 84 or 85 degrees as well. So that's the case if you are playing like a CPU sensitive game like a Warzone, Battlefield, beat Valorant, you will see once the load on CPU comes, it reaches over 40 watts like just in an instant. And because of that, since the CPU is utilizing over 40 watts of power, you will see the temperatures hovering around 90 to 95 degrees depending upon your room temperature. So that is what is happening around with the thermals of Asus TUF A15 2022. In my opinion, they have seriously improved the thermals. They have given bands on both the sides of the laptop now, and like there are 4 bands now and like 2 bottom bands as well. So basically they have tried everything to make the thermals of this laptop as better as they can, but still there are some areas of improvement, and I think they will be improved. But overall, looking at the picture for the price they are asking for this laptop, I think the performance is really great and thermals have like seriously improved.
And you are welcome, bro. Just want to like thank you so much for the donation, man. Thank you so much for taking the membership as well, bhai. Thank you so much for that. And WNF Gaming, bro. Thank you so much for changing your name back to WNF Gaming again, bhai. Just for me. Thank you so much for that, man. Like it really means a lot to me that you are ready to do so much for me. भाई कई बार क्या होता है कि भाई वो थर्मल पेस्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं वो अप्लाई, एंड दैट इज द इशू, जिसके कारण थर्मल पेस्ट कई बार जल्दी डिग्रेड हो जाता है. तो अगर इस बार आप थर्मल पेस्ट चेंज करा रहे हो तो ट्राई टू इंसिस्ट कि भाई जो आप थर्ड पार्टी वाला जो लाइक आप जो बाय करके दे रहे हो वही यूज़ करें. रितेश भाई बहुत समय बाद आए भाई. हरे कृष्णा भाई. भाई मैं बहुत मस्त हूँ, होपफुली आप भी बहुत मस्त होंगे. और भाई मैंने न्यू लैपटॉप ले लिया मे में, एंड नाउ आई एम स्ट्रीमिंग थ्रू इट. जस्ट सब्सक्राइबर हो 4600 भाई. डेफिनेटली वर्थ इट है अगर आपको बजट 55 की है एंड यू कांट एक्सटेंड योर बजट ओवर दैट. डेफिनेटली इट्स वर्थ इट भाई. लॉन्ग टाइम नो सी ब्रदर. रितेश भाई, या इवन रितेश भाई हैव जॉइंड अस आफ्टर लॉन्ग टाइम. वो जल्दबाजी में थे. ओके सक्षम भाई, समझ गया भाई मैं. चलो कोई बात नहीं सक्षम भाई, नेक्स्ट ईयर वेट करेंगे हम आपकी फोटोज का. भैया जी 80 के बेस्ट लैपटॉप कौन सा है नॉर्मल गेमिंग और कॉलेज के? सैटर्न भाई आप मेरा भाई लिंक चेक करो भाई, मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करोगे उसमें मैंने हर एक बजट के लिए अलग अलग लैपटॉप दिए हुए हैं. आप अगर सिर्फ चेकआउट करोगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं किसके बारे में बात करूँ. इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन बैटरी लाइफ आई थिंक Asus TUF A15 2021 मॉडल इज द वे टू गो. इफ यू जस्ट वांट द बेस्ट रॉ परफॉर्मेंस देन Nitro 5 इज द वे टू गो विदाउट एनी डाउट. इफ यू आर ऑन like a dream bro, as soon as the VRAM usage hits over 4GB of usage, over 4GB usage, you will see there is day and night difference. It's like it can even be 60 or 70 or 80% sometimes when the VRAM usage is over 4GB. Under 4GB the difference is around 20 to 25% or even 30% in some of the games. If you are on a budget 30, it's good. Yeah, you are so like on point of end up giving bro. All-rounder fan page, please go for 6800H if you can go. The A17 that is linked in the description, you can see, you guys can go and check it out. It is available at 1,13,000 rupees now, 1,14,000 rupees now, and it's a mind-blowing deal if you want to buy a laptop right now. Do you know? Yeah, my brother played IGI when he completed it in front of me, so I like even though I for me that game was really really tough. My brother loved it, so I have like watch him play that game and complete it. भाई मेरा BSc कंप्लीट हो गया 40%. अब MCA कर रहा हूँ फ्रॉम पर. ओ भाई मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू भाई प्रीतेश भाई. और भाई सुन के अच्छा लगा भाई कि आप भाई आपकी लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर रहे हो भाई. 15 लीजन 5 भाई I think TUF A15 will have like slightly superior perform because of the 6800H, because 68 like always remember Rico bro, 6800H is a competitor of i7 12700H. Don't go by the scores because the scores can lie a lot, especially since there are a lot more cores in Intel. The score will always like benefit Intel in terms of like how good the scores are. But if you are going for a gaming centric laptop and if you are getting both Legion 5i and A15 for the same price, I think it totally depends on your like what you want to get. I am personally a very big fan of Legion devices, but their after sales services haven't been that great. So I might just be a bit worried about the after sales services, because after you get a laptop you have to have the best after sales services, because it's not when you buy the laptop that it matters. It is after you have bought the laptop, you have to look into the laptop, you have to get it constantly clean, change the thermal paste and all these things, and you will for sure need a good company which provides good after sales services. Musty Biscuit by bit TUF A15 like 2021 model 5900. I checked the temperature will go over 9 degrees bro, but believe me, you shouldn't be worried about the about those temperatures. The thing is that like I have said this many a times, even like bigger YouTubers who have much more knowledge than me, like Jared have said that like there are architects designers who build these laptops, and as long as your laptop is not turning off, which is a safeguard action that is took by the laptop itself to save itself from burning out, you shouldn't be worried about the temperature. The temperature is gonna go 90 degrees because these are the gaming laptops, and I know the TUF doesn't have the best gaming like the thermal system, but it doesn't mean the 90-degree temperatures are bad. It totally depends on you, like how worried about are you. Apart from that, your laptop will not be damaged because of 90 degrees of temperature bro. Can run 60 FPS at 10 RTX, everything on high-end data quality vibe bro. Because I think bro you have the 95 watt RTX 3060 if I'm not wrong, and that might be the case that I think even because, and like
like if you are indoors, even at very high settings, you won't have any issues with getting over 60 FPS. But with outdoor, when you're singing like swinging through the city, there are some FPS drop, and that have been the case with every laptop, like with every with every PC and a laptop, no matter what the configuration is. Lonely Okado bro, I personally won't recommend i9 processor, because for the price they are selling it for, you can get better options. And I don't think that i9 11th generation is that much useful, especially if you are pairing it with RTX 3060. Like what is the price that you are getting it for, and then I can recommend you some better models bro, for sure. Is Warzone gonna perform well? Like Dream bro, it's gonna perform like decent, but DLSS you can expect around like 90 to 100 FPS as well in some cases. But if you're going for ACER NITRO 5 2022, the model that is in the list of best laptops on the 80K list, it have 8 GB of RAM, so you should upgrade to 8 more GB of DDR4 RAM, that is just have 16 GB RAM in dual channel, and you will have a great performance in like a Warzone as well. बिल्कुल भाई परसों ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक एक्सगन ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन मैन. भाई काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस, तो व्हाट आई विल डू, आई हैव टू जस्ट डू वन थिंग. So let me just do that, and then I will get back to gaming. I will definitely miss out on some questions, mainly because the thing is that like, okay, so it is working perfectly fine now, because I was on the performance on performance in Armory Crate, and now the CPU is able to utilize more power. And then Lenovo double bar radio center technician here for my mom's Lenovo laptop. I feel like if that's the case, Rico bro, like I seriously don't have any issues bro. You should definitely go for the Legion device. They have the best thermal. They are the most balanced devices in the market that you can get. What is the price that you are getting Legion 5 by 12500H RTX 3060 for? And then I will be able to advise you in a better way bro. What the heck? What is happening around here? Okay, so I need to go there. Okay, please play. Like what do you want me to play? Bait Yashada, bro. Love you. Thank you so much. Yes, bro. It really means a lot to me. It really means a lot to me that you love my content bro. Like I always try my best कि भाई मैं जितना अच्छा content बना सकता हूँ उतना अच्छा content बनाऊँ आप लोगों के लिए, so that वो आप लोगों को help कर पाए. And that's my only motive. If अगर मेरा content आप लोगों के लिए helpful है, if I'm like मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ अगर वो चीज़ आपको help out कर सकती है, तो इससे better मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता भाई. रुद्र टेटे bro, I think I remember you, but I don't remember कि भाई हाउ लॉन्ग लाइक कितने समय पहले आप लाइव स्ट्रीम से आए थे भाई. आई एम यूजिंग अ कूलिंग पैड. आई ऑलवेज यूज ए कूलिंग पैड, एंड इट्स नॉट बिकॉज कि भाई कूलिंग पैड से टेम्परेचर कूलिंग पैड से बिल्कुल अच्छे नहीं होते भाई. ये लाइक इवन इफ यू विल आस्क एनीवन हु हैव बीन ओनिंग अ लैपटॉप और हु हैव लाइक रियली गुड नॉलेज इन लैपटॉप्स एंड देयर थर्मल्स, दे विल से कि भाई लैपटॉप कभी भी कूलिंग पैड यूज़ करने से थर्मल इंप्रूव नहीं होते. बट क्योंकि लैपटॉप में नीचे फैंस होते हैं, तो आपको हमेशा लैपटॉप को एक एलिवेटेड सरफेस पर रखना चाहिए. अगर आप एलिवेटेड सरफेस पर रखोगे तो आपके जो टेम्परेचर हैं वो अंडर कंट्रोल रहेंगे, और यू विल गेट स्लाइटली बेटर टेम्परेचर, लाइक स्लाइटली बेटर टेम्परेचर. क्योंकि फ्लैट सरफेस पे आपके जब भाई जो नीचे वाले फैंस हैं जो कि मेन चीज़ है जहाँ से एयर सक इन करते हैं, अगर वही सक इन नहीं कर पाएंगे या तो भाई आपके टेम्परेचर अच्छे कैसे मिलेंगे भाई F15 और भाई जो आप A15 की बात करें, दोनों में बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है भाई. तो प्लीज़ पहले उसको कंसिडर करो भाई. ऑलराउंडर फैन पेज भाई, अगर आप इतना प्राइस स्पेंड कर सकते हो तो भाई फिर मैं कुछ और चॉइसेस बता सकता हूँ. आप F15 कितने में मिल रहा है ब्रो, आप वो बताओ मुझे. My time to go play, but I'm playing anything on the high. Like that's just so great to know. W&F gaming bro. For most of the people, I think like even the last year series and this year series have almost similar temperatures. Like when you're talking about like temperature, they are quite similar to tough laptops as well. But tough laptop like for sure doesn't have the like this year Rogue and tough have like almost similar thermals and
like thermals and specifications, everything. Rico bro, you are talking about the F15 or the A15 laptop, बता दो अंदर 70,000. सतबीर भाई मेरा आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करोगे ना सतबीर भाई, तो यू विल सी द लैपटॉप दैट आई रिकमेंड अंडर भाई हर एक प्राइस कैटेगरी में. तो 75K के अंडर अगर आप जा रहे हो भाई, स्ट्रिक्टली 75K से ऊपर नहीं कर सकते हो बजट. जो मैंने A15 भाई मेंशन किया हुआ वो ले लो, जिसमें 16GB के रैम है, तो 75,000 में पड़ेगा. वो लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि उसमें डुअल चैनल रैम है, तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी उस लैपटॉप के साथ. Ali Saidi bro, I think you should definitely upgrade your BIOS. पहली चीज तो ये like that is the first thing that I will recommend you to do. If you haven't upgraded your BIOS till now, like if you have upgraded your BIOS like if you have already updated your BIOS, what I'm gonna suggest is like try to disable a turbo boost for your CPU for a bit and see if your like GPU can go up to 140 watt. If it can't, I think you should just skip the part and just return the TUF G15 that you have, because I have heard it from a lot of people as well that their G15 is not reaching 140 watt. But in my case, my laptop is able to reach around my laptop is able to my laptop is able to reach around 133 to 135 watts in some of the cases, in most of the games, like especially if they are GPU intensive. भाई अच्छा A15 जो मेरा वाला है और F15 भाई देखो टोटली आप पे डिपेंड करता है. F15 में क्योंकि पी कोर का टेम्परेचर 90 से ऊपर कॉन्स्टेंटली रहेंगे, बट यू माइट गेट बेटर परफॉर्मेंस, तो आप F15 के साइड पे जा सकते हो भाई, इट्स नॉट अ इशू. और अगर आपको बेटर बैटरी लाइफ चाहिए भाई, ठीक है, थोड़े से बेटर थर्मल चाहिए स्पेशली इन गेमिंग, तो भाई आई थिंक इट इज A15 इज द बेटर वे टू गो. बट टोटली डिपेंडेंट ऑन यू भाई. परफॉर्मेंस में इतना बहुत कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है कि जमीन आसमान का डिफरेंस हो भाई. सही लैपटॉप प्रदीप्त कुमार बहरे ब्रो, सॉरी मैंने अगर मिस प्रोनाउंस किया हो. द ओनली थिंग इज दैट कि भाई अगर आप वो लैपटॉप के लिए जा रहे हो प्रदीप्त ब्रो, तो लाइक द ओनली डिफरेंस बिटवीन टफ एंड स्ट्रिक्स इज कि भाई इस साल स्ट्रिक्स में बहुत सारे भाई लाइक स्ट्रिक्स में आपको बहुत सारी RGB मिलेगी और टफ में बहुत ज़्यादा सुपर लॉक मिलेगा. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि भाई आपको क्या चाहिए. अगर आपको स्ट्रिक्स G15 के साथ जाना तो इट्स अ गुड लैपटॉप इन माय ओपिनियन. हाँ कंटेंट बहुत अच्छा है आपका भाई, थैंक यू सो मच भाई रितेश भाई. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ भाई आपके जैसे लोग भाई जो हमसे कनेक्ट करते हैं चैनल के थ्रू, तो भाई वो बहुत हेल्प करता है मुझे, एंड इट ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी कि भाई मैं लोगों को कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ लाइक टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी. भाई गेम नहीं चाहिए, प्रोडक्टिव वाला लैपटॉप चाहिए, लिटिल एडिटिंग भाई, लिटिल एडिटिंग अच्छा ठीक है, प्रोडक्टिविटी वाला लैपटॉप चाहिए. तो भाई इवन प्रोडक्टिविटी में भी भाई वो बेस्ट लैप भाई देखो, तो देखो मैं सच बताऊँ सतबीर भाई, मैं क्या सजेस्ट करूँगा, आप भाई 80,000 का ACER NITRO 5 लो 2022 वाला, ठीक है, उसमें भाई 8GB रैम अपग्रेड करवा लेना, 3,000 की पड़ेगी. 83,000 में वो लैपटॉप परफेक्ट है और उससे बेस्ट परफॉर्मिंग लैपटॉप को नहीं मिलेगा. सिर्फ उसमें इतना दिक्कत है कि उसमें आपको बग स्विच नहीं मिलेगा, बाकी 95 वॉट का RTX 3050 और वो लैपटॉप बहुत मक्खन की तरह चलेगा और आपको पसंद भी आएगा. चलिए भाई एज आर्केड ब्रो चल जानी चाहिए मेरे हिसाब से भाई, लेकिन आई थिंक वेरी लो सेटिंग्स में चलेगा और 720p पे चल पाएगा भाई. एक बार चला के देख ही लो, क्योंकि मैंने जो देखा मेरा चल जाना चाहिए. एंड भाई देखो मेरा रूम टेम्परेचर भाई अभी मैं बताऊँ तो 28 डिग्री तो भाई मेरा रूम टेम्परेचर है, तो भाई इट्स क्वाइट नॉर्मल कि भाई CPU और GPU थोड़े हाई रन करेंगे इन तेज ब्रो, और भाई इट्स क्वाइट नॉर्मल भाई इन माय ओपिनियन. बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन दैट यू आर लाइक भाई पर्सन टू पर्सन डिफर करता है भाई. मेरे लिए ये हाई टेम्परेचर नहीं है, हो सकता है आपके लिए हाई हो. थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग आउट WF गेमिंग ब्रो. भाई बता दिया ये जारकेट ब्रो. भाई मैं देखो RTX 3060 भाई आप कौन से लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हो पहले वो बता दो भाई राजू भाई, उस हिसाब से मैं थोड़ा बता पाऊंगा आपको अच्छे से. देखो भाई GPU डायरेक्ट कंपैरिजन करना सही बात नहीं है, कौन सा CPU है वो भी बहुत मैटर करता है भाई. ओके भाई लाइक सीरियसली भाई लाइक 5i इज अवेलेबल एट 1.30 lakhs. आई थिंक इट्स अ रियली ग्रेट डील.
if one want to get it. Mainly because the 12500H is a really good CPU, but it is not like, if you are talking about the productivity, it's not gonna compare to 6800H if you are just talking about productivity and the battery life. But if you are gaming, I think 12500H can give you similar performance 6800H as well. But even if you will see, Jared Tech had done the testing, and even he has said that 12700H, that is i7 processor, and 6800H processor, like 12700H can beat like in around in 60 to 65% games can beat 6800H on 1080p. But when it comes to 1440p, when the CPU can't get over 45 watts of power, then you will see the 6800H just science a lot more than 12700H, and it performs better in game. In almost 70% of the games it performs better than Intel. With Intel you're definitely gonna get better 1% lows, but like that's the whole case. There are so many if and buts. नो इशू भाई, ऑल ऑन फैन पेज ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग भाई। दीपांशु गौरव भाई, आपको कभी भी लैब भाई टफ की बिल्ड क्वालिटी से कोई इशू नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट बिल्ड क्वालिटी है, इट इज रियली रियली गुड भाई। त्रिगुना जाना भाई, बिल्कुल 4800H और RTX 3050 के बारे में जो आप बात कर रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट लैपटॉप, कोई इशू नहीं होगा आपको। नो इशूज आर AJ आर्केड ब्रो, इट्स माय प्लेजर। प्रदीप्त ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन ब्रदर भाई, इट्स माय प्लेजर की लाइक यू ऑल आर हियर एंड आई एम एबल टू हेल्प यू ऑल आउट। See you later. No issue, W&F Gaming bro. Thank you so much for joining in, man. And happy Independence to you too as well. And happy Raksha Bandhan as well, brother. And it was like really good to see you here after such a long time, bro. Thank you so much for that. भाई आदित्य ब्रो, मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि एडवांटेज एडिशन लो, इट्स नॉट गुड इनफ लैपटॉप एंड इट हैव अ लॉट लाइक यू विल ऑलवेज हैव सम हेडेक one time or the other time, mainly because that laptop is like extremely software sensitive from what I've seen. Leo says, bro, definitely. It will definitely be like for next 3 or 4 years, you won't have any issues. But even with TUF A15 2021. But I think if you are going for the 2021 model, please go for A15, the 5800H model, which is the better model in terms of gaming performance. Bro, thank you. Always answer the question. Thank you so much for being here, man, and thank you so much for this kind. But it really means a lot to me, and it always motivates a lot. Like it always gives me a lot of motivation, bro. Thank you so much, Sadbir bhai. Jayed भाई, हेलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन ब्रदर। भाई आई डोंट नो कि भाई लाइक भाई आपने कौन सा लैपटॉप चेक किया दीपांश भाई। भाई मेरे लैपटॉप की भाई सही बता रहा हूँ, मैं 2 ईयर से लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ भाई। बिल्ड क्वालिटी में तो भाई नो फ्लैक्स, नो सीकीनेस भाई, मुझे तो कुछ नहीं मिला है भाई। हो सकता है भाई कुछ आपने यूनिट देखे हो जिसमें आपको लग रहा हो, तो भाई इट टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन एज वेल, बट मुझे कभी नहीं मिला भाई ऐसा इशू। डू यू हैव मक्सो चैनल? या भाई आई हैव मक्सो चैनल नवारो एल RD bro, RD दत्ता bro, thank you so much for joining in, man. How are you brother? हर्ष कोहली भाई, मैं एक नंबर हूँ भाई, आप कैसे हो भाई? Hopefully bro, tomorrow I will try to do one more live stream bro. Thank you so much for joining in today bro, W&F Gaming bro. It really means a lot to me that you were here. Like I have the 1440p model with DCI-P 300%, that is 120% sRGB, so color is just perfect for me. If you are going for 1080p model with 62.5% sRGB, you like it is good enough for gaming and content consumption. But if you are someone who wants to make content and like who have already worked with 100% sRGB model or DCI-P 300% models, you will see the difference that color is not that much accurate with those laptops and it looks dull. क्या कर रहे हैं लाइफ में भाई? बस कुछ नहीं भाई, जॉब में लगे रहते हैं। अभी लॉन्ग वीकेंड चल रहा है तो बस वही एंजॉय कर रहे थे। गेम रिलीज हुआ तो गेम को ही रिव्यू कर रहे थे भाई, तो बस यही चल रहा है लाइफ में भाई। रितेश भाई, oh like you already have the F15, like many congratulations to you brother, and you shouldn't be worried about anything. The thermals are just bit on the higher side, but even if they are on the higher side, you can just get your laptop repasted, thermal paste repasted, and you might be able to get the better temperatures, and you shouldn't have any issue. 15. Like you are talking about Dash bro, please don't go for the Dash laptop bro, connecting error bro, please. Dash laptops are not worth it. Those are thin and light laptops and not the gaming laptops bro. You please don't compare it with A15. The F15, the gaming F15 have the 140 watt RTX 3060 as well, so they only have a difference of the CPU if you are talking about the gaming F15 and gaming A15.
हर्ष भाई याद थोड़े थोड़े तो याद है भाई, लेकिन भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तो भाई कभी कभी भाई निकल जाता है दिमाग में से, तो आई एम सो सॉरी भाई. Yeah, भाई always play on turbo modes भाई, and I always try to like the fans are always maxed out. No bro, Arijit भाई the fans are there to be to run at the maximum possible speed, and these are the gaming laptops and they are built for gaming, so you have to play at turbo mode to get the best possible performance. भाई कार्तिक गोस्वामी ब्रो भाई बजट क्या है फिर मैं बता देता हूँ भाई. थैंक यू सो मच ब्रो, सी यू सून WF गेमिंग ब्रो. Legion 5 by Rico Brahman, like for that price I think it is a perfect deal bro. Like that's why I was asking Karthik his price. But even like for college I might recommend that, but the battery life won't be that good, and the performance, like if you want to game it won't be that good. Ninja gamer भाई, hello पाकिस्तानी भाई, कौन पाकिस्तानी भाई? Like I am पाकिस्तानी भाई, I am from India भाई, Ninja भाई. Or from hi, hello from Pakistan. What you wanted to say, Ninja भाई? By perfect deal at 1.08 lakh, it's a perfect deal that side, bro. Go like bit display, bro. If the 120 hertz model have the good build quality, just go for it. Like if it is good enough. i5 12th generation is for sure superior than 4800H, but the thing is that you are talking about gaming and you have to spend around 7k more to like make the ACER NITRO 5 dual channel. If you can do that, it's not an issue. 90k max, just go for by bro. What I'm gonna say, Karthik bhai, just go for ACER NITRO 5 for 80k. Just spend 3 more k and upgrade your RAM to 16GB. Buy 8GB DDR4 RAM as well, and then upgrade your RAM to 16GB, and you will see how great the ACER NITRO 5 that is costing around 80k right now. The link is in the description if you want to check that laptop out, and you will be quite amazed to see how good that laptop performs. Monitor under 6,000. But I like seriously like don't have much knowledge about monitors as of this moment. I'm extremely sorry for that. Quick question, bro. I'm getting one. Ishank bro, if MSI after sales, like if you have dedicated MSI service centers in your city, you should definitely go for MSI laptop. It will beat Legion 5 Pro like any day of the week without any issues, and it is one of the best performing laptops. You will even get better battery life than the i7 12700H Legion 5 Pro without any doubt. Like there are a lot of questions coming in, and guys, I will just focus on gaming as well because I don't want to bore you guys with like answering all your questions and like not playing the game. Rico Broman, thank you so much for being here, man, and thank you. Well, for sure, upload the Warzone video soon, bhai. Thank you so much. Good night, man. Thank you so much for everything, brother. मेरा फोन चोरी हो गया था. ओ भाई अच्छा फोन चोरी, चलो कोई बात नहीं भाई. रितेश भाई आप आज हो ना भाई, it is more than enough. भाई not with ray tracing on. Ray tracing is turned off as of this moment, and DRS is set to quality. Arjit भाई. By the way, one thing I want to know about thermal paste. Should I change thermal paste about 1 month use? Some people said also the pre-built. Like it's quite true. It's quite true, Leon bro. Like you just bought the F15 if I'm not wrong. Or like did you purchase it a bit earlier as well and you just got a thermal paste 1 month back? Like in my opinion, like the pre-built like the for sure the pre-built thermal paste and the greatest. You should definitely go for the better thermal paste. And like I have one that like I was not able to use because I got the service done through the Asus like those Asus engineers, and they don't apply a third party cooling like what do you say, thermal paste on our systems until your laptop is under warranty. So you have to remember that if you are changing it by yourself, it might void your warranty if they came to know about that your I got you, Dad. 眼睛睁大点。
If they came to know about that, you have changed your thermal paste by yourself. No! Enough! We have to leave. Now. Oh my god, like seriously? That this is one of the biggest twists in this game, mate. Bitch game, this is Spider-Man remastered, Robin, bro. Thank you so much for joining in, brother. It is better than PS5, bro. But the thing is that the games that release on PS are much more optimized for PS5, and that's why you always gonna get better performance on PS5 for the games that are releasing. But definitely RTX 3060 should be comparable with PS5 and even up slightly bit better, because the RTX 3060 is really powerful. With heavy editing, After Effects, and the one point by connecting array. If you are going for a laptop that you really want mainly for editing, I think you should like definitely go for the laptop like that have the 12th generation i7 processor. So like in that case, I think I might recommend you to go with the F15. It is much better. I mean, it might cost you around 1,35,000. So that's the case. But if you are going for any other laptop at till 1.20, like I think if you will go with Asus TUF A15, the model that is in the description, even with 6800H and RTX 3060 140 watt, and it have a great battery life, so you won't have any issues. The performance, like there is not like that big a difference between i7 12700H and 6800H in terms of performance. So even if you will go with 6800H, you won't feel like that you are losing upon something. ईशांक भाई सीरियसली बताऊं भाई, MSI लैपटॉप सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग लैपटॉप होते हैं। चाहे आप लीजन से कंपेयर, लेनोवो से कंपेयर कर लो, आसूस से कंपेयर कर लो, किसी भी लैपटॉप से आप कंपेयर कर लो, दे आर द बेस्ट लैपटॉप्स। Do I know you? I'm Peter Parker. दे आर द बेस्ट लैपटॉप्स City Hall. MSI लैपटॉप। तो ईशांक भाई, अगर आप MSI लैपटॉप की अगर आप सर्विस करवा सकते हो लैपटॉप की, आपके एरिया में सर्विस सेंटर हैं, तो भाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप दैट यू कैन गेट। और भाई जो लाइक हर्ष भाई, विच मॉडल भाई, जस्ट टेल मी द होल कॉन्फ़िगरेशन। यू गो फॉर A15, A17, 1080p डिस्प्ले, 300 Hz डिस्प्ले और 144 Hz डिस्प्ले और 165 Hz डिस्प्ले और 1440p डिस्प्ले। It's part of God's plan. Yeah, Ninja Gamer bro. At definitely at 1440p difference is like even 25 to 30 FPS as well in some of the games. But at 1080p difference should be around 20-25 FPS, mainly because at 1080p the GPU doesn't get utilized for you. No issue, Leon side bro. You are here. Thank you so much for being here, man. It's like it's just my like I'm extremely happy to help you out, bro, with whatever you can. Legion is Legion, definitely a star boy, bro. But the thing is that Legion doesn't have the best possible services in India. So like personally, I love Legion. Legion is one of my favorite brands to be one of the best laptops that I really want to buy. But if they don't have great after sales services, I told you I can't start a man. by like viable, even buy them. Some solid evidence and we'll talk. Solid evidence. Right. Hey, it's me. Hey, so what are you thinking? I'm thinking I screwed up, and that kid lost his father. भाई IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंजीनियर हूँ भाई मैं। इससे इंजीनियरिंग की है और उसके बाद मैं अभी करेंटली फुल टाइम इंजीनियर हूँ, फुल स्टैक इंजीनियर काम कर रहा हूँ मेरी कंपनी में। I've been doing some research. भाई आई थिंक इट शुड बी इक्वलेंट टू PS5। Controlling interest in this recycling center last year. You think he's hiding out there? भाई GeForce G15 laptops are not gaming laptops. Those are thin and light laptops that you can use for gaming. So don't consider them as gaming laptops. Definitely 140 watt RTX 3060 will definitely perform really good. One more thing. I talked to the tech Hello Nate Code bro, how are you brother? How are you brother? all claiming Martin Lee has the power to Friend of feel like the need of control, like I have felt good of What does that mean? They say it's sort of like mind like control. definitely. It brings out the negative part of you. Makes you do things you wouldn't normally do. Sounds a little far-fetched. Definitely. From a guy who can run up walls. Definitely man, like no matter which PS game you play, you will always feel like if you had a controller it might have been a lot better, and it's the same case with the Spider-Man as well.
A17 is really really great guys bro. The one that is given in the description, it is costing around 1,14,000 as of this moment, and it is a great laptop if you want to go with at 1,14,000. The only issue is that it doesn't have the best possible displays. Today is a day for somber reflection. Like Harsh bhai, Morning. just tell me everything about from the specs to everything. Okay. A15, okay, 2021 bro, 5800H and RTX 3060 model. Is that the one? Harsh Shotar bro. With me, Legion. People say I blame everything on Spider-Man. I don't Bro, Jogal Pratap bro, if you just want to go for pure performance, I think A17 might give you better performance than Legion 5. It can give you around 10% better performance. But if you want better thermals, I think Legion is the way to go. Even Legion has slightly better, I think a better display as well as 1440p display with 100% sRGB. So that. But like just try to confirm that you have good after sale services in case of Legion, because there are a lot of people who are facing a lot of issues with their Legion devices. So like since you are buying such an expensive laptop, you should get the best possible after sale services. So that's the only issue that I have faced, that I have like got to know about Legion pretty recently. So that's the case. Good night Sadbir bhai, thank you so much for joining in man. Isham bro, without a doubt, bhai, anything like with 60 FPS, even over 40 FPS looks really good. Like when you are on 35 or 40 FPS, sometimes it might feel laggy, but when you are around 50 to 60 FPS, it doesn't even bother you that you are playing at 60 FPS on a 165 Hz display. MSI can beat A17 any day of the week. MSI, even with its 11th generation processor, can beat a RTX 3070 model of the Legion without any doubt. MSI laptops, especially the MSI G series, GP series, GE series, are some of the best series that one can ever purchase. The performance is top notch. They have the best BIOS update. Like there is so much that you can change and upgrade. So like that is great. MSI laptops are top notch, but the only issue that there ain't enough service center for MSI in India, and even if they are third party service centers, and you ain't gonna get the best possible service like after sales services, and hence I don't recommend MSI laptops. भाई जोगल प्रताप, it totally depends on you. If Legion के भाई सर्विसेज अच्छी हैं तो I might like tell you to go with Legion, क्योंकि Legion में 1440p की डिस्प्ले है और उसमें भाई 100% sRGB है. लेकिन अगर आपको भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और बहुत अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए तो आई थिंक Asus इज द वे टू गो. भाई A17 ले लो ना भाई. A17 1,14,000 का पड़ रहा है भाई. A15 अभी मिल नहीं रहा, उसमें 512GB की SSD आ रही है और 3,000 ज़्यादा लगा के आप A17 बाय कर सकते हो. तो भाई कनेक्टेड अगर A17 बाय करो ना भाई, उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उससे आप बाय कर सकते हो. भाई डेल G15 में भाई मैं रिकमेंड नहीं कर सोलो ब्रो. आई एंड गोना रिकमेंड डेल G15 बिकॉज डेल G15 had a lot of issues with the last year model. So I might suggest you to go with F15. F15 definitely is a better choice than Dell G15 in my opinion. भाई पोर्टिंग में यही एक प्रॉब्लम है. हाँ भाई वही हो जाता है भाई कुछ ना कुछ. देखो भाई देखो जो कर रहा है ना भाई प्ले स्टेशन जो स्टूडियोज हैं वो क्यों कर रहे हैं, गेम रिलीज क्यों कर रहे हैं पीसी पे, क्योंकि दे आर थिंकिंग दैट दे कैन ब्रिंग सम पीसी like the people who play game on PC to PlayStation. That's why they are doing that. So they will always they will do something that will make you feel like that you should have played this game on the PlayStation instead of PC. भाई भाई प्रोसेसर कौन सा? ओके प्रोसेसर बता दे 4800H. ओके भाई लाइक इट्स अ गुड एनफ लैपटॉप भाई. बट जो 8GB रैम ले रहा है भाई उसमें 16GB वाला मॉडल ले लो, 75,000 कॉस्ट करेगा. उसकी भी लिंक मैं आई थिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी. वो लैपटॉप आप लोगे आप बहुत खुश रहोगे भाई. हर्ष भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी 75K वाले मॉडल की. भाई जाहिद भाई A15 A17 कोई भी ले सकते हो, सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है. अगर भाई जो आप A15 जो 1,10,000 था और A17 जो 1,14,000 में मिल रहा है, अगर उनके बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं A17 रिकमेंड कर दूंगा भाई. अभी आपको ये वाला गेम फ्री में कैसे लूँ भाई. ओपी ब्रो दे आर मैनी बेस यू कैन गेट द गेम्स फॉर फ्री, बट आई कांट टेल यू लाइक any way that you can do it on at least on the live stream. Like Ishang bro, you will definitely feel like that the
display is a bit blurry if you will switch it to 1080p. All like if you're on 1440p display, 2K display, just always be on 2K. I might suggest you to go with A15 bro, or Dell G15. A solo bro is not something that I'm gonna ever recommend to anyone, because Dell have a lot of issues from what I know. Yeah, bhai, definitely, bhai. Just go for A17 Jogal, bro. There is just one small humble request from my end. If you are buying the A17, bro, just use my link to buy that laptop, so that it's my affiliate link. I will get paid from Amazon if you're buying it online. I will get paid from Amazon, and it will help me to buy more laptops for the channel, and will be able to help you out a lot more. So if you're buying the laptop, please use my link. ब्रो ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा ना? नहीं भाई, ज़्यादा इतना कुछ बड़ा नहीं होगा, लेकिन बैग थोड़ा सा बड़ा तो लेना पड़ेगा 17 इंच लैपटॉप के हिसाब से भाई. लेकिन भाई कनेक्टिंग एरर देखो, A15 और भाई A17 थोड़ा सा ही डिफरेंस है भाई. आई थिंक एंड द डिफरेंस विल बी बर्थ भाई, जो आपको भाई 512 GB का SSD अपग्रेड मिल रहा है उसके. Sagnik Patnaik, bro, I'm quite satisfied with this laptop. Even I was satisfied with last year's model, but the only issue is that even by I'm just going like at first I'm just gonna close the Spider-Man and I'm gonna open up another game. The only thing with this laptop is that whenever there will be a CPU sensitive game, where like CPU intensive game where the CPU will be utilized much more, you're gonna get temperature over 90 degree on like in case of a CPU. But if you are playing a GPU sensitive game like I'm just going to open up Cyberpunk, and you will see the load will move like the GPU will reach around 133 watts and the CPU will remain around 20 watts, and you're going to get temperature of 73 to 74 degrees, and on GPU the temperatures will be 83 or 84 degrees. So I think in that case, like in terms of GPU sensitive games, this laptop is like near to perfect. In terms of a CPU sensitive game, you might feel like the CPU is running a bit hot, around 90 degrees. दिल का चैन. हाँ भाई, ये स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन भाई. वो गाना कभी नहीं भूल सकता भाई लाइफ में. that was so popular, and especially when Rishabh Pant that thing on the ground, like in one of his videos, when it like उसके बाद तो भाई उसने भाई काफ़ी ज़्यादा वो पकड़ लिया था, तूल पकड़ लिया था उस चीज़ ने भाई. सबसे बड़ा पता है क्या इशू है भाई? जैसे अब मैं भाई अब ये गेम खेल रहा हूँ ना, साइबरपंक. अब भाई ये गेम कैप्चर के थ्रू आएगा नहीं. आई डोंट नो कि भाई कौन से नशे कर लेता है साइबरपंक हमारा. और अब मुझे यूज़ करना पड़ेगा डिस्प्ले कैप्चर. अब डिस्प्ले कैप्चर यूज़ करूँगा तो भाई गेम की परफॉर्मेंस लो हो जाएगी. क्या ही कर सकते हैं भाई. भाई हमेशा 140 वॉट का ही लो. और भाई 95 वॉट वाला लास्ट ईयर वाला मॉडल था जो 1500 HX मिल रहा है आपको, और 140 वॉट इस साल आया है. तो भाई अगर आप 140 वाला लोगे तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी. और एक और चीज़, अगर 140 वॉट वाला आप अगर CPU RTX 3060 लोगे किसी भी आसूस लैपटॉप में, तो आपको मक्स स्विच भी देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी भाई. भाई बढ़िया है लैपटॉप भाई, लेकिन A15 नहीं, F15 है भाई, i7 12 जनरेशन वाला. लेकिन वो 1,10,000 में आप खरीदोगे तो भाई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको. भाई जाहिद भाई 16 GB रैम अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है, डुअल चैनल रैम होना चाहिए. 16 GB बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Thank you so much, Leon bro. It really means a lot to me, and I'm extremely like thankful to you that you are here and like motivating me with your kind. But bro, it really means a lot to me. I try my best to bring the best possible content for you all, and like whenever you guys say that my content was able to help you out, I always feel like extremely happy, and I always think like that I'm fulfilling my duty to the fullest. Thank you so much, Jogal bro. If you can do that, it will really help me out, bro. Howdy, Night City. Definitely भाई क्रिप्टिक ब्रो 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं भाई. ये 72022 लो ना भाई 099 ब्रो, क्योंकि उसमें 140 वॉट का RTX 3060 है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है भाई 2021 वाले मॉडल का. ओपी ब्रो यू बॉट A15 भाई. कॉन्फ़िगरेशन क्या भाई थोड़ा बताऊंगा. नो इश्यूज कनेक्टिंग एरर ब्रो. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन ब्रो. भाई GTA 5 भाई GTA 5 पढ़ा नहीं है ईशान भाई, नहीं तो मैं खेल लेता भाई. मैंने इसके वीडियो बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी. इज द 8GB वर्जन ऑफ A15 भाई. एक मिनट रुको, मुझे लोड करना पड़ेगा गेम. आई थिंक
भाई किसी ने गेम खेल लिया बहुत सारा। ओके लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम wherever we are and I will try to get out further। भाई वैलोरेंट भी नहीं पड़ा है शौमिक भाई, मैं अब भी आप लोगों को गेम शो कर देता हूँ, फिर आप लोग बताना कौन सा गेम खेलो एंड आई विल प्ले दैट गेम। भाई 8GB वेरिएंट, यू आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएंट दैट कम्स, आनंद भाई जो लैपटॉप 75 के अंडर आता है उस लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हो क्या भाई? does using a laptop cooler help it? भाई डेफिनेटली सागनिक ब्रो, क्योंकि नीचे लैपटॉप में नीचे फैन लाइक वेंट्स रहते हैं, तो अगर आप कूलिंग पैड यूज़ करोगे डेफिनेटली, आप स्टैंड यूज़ करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट बेटर टेम्परेचर, मेनली बिकॉज क्योंकि नीचे वाले नीचे के जो भाई फैंस हैं वो और अच्छे से काम कर पाएंगे एंड इट विल हेल्प यू। एंड आर जॉर्डन ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन मैन, हाउ आर यू ब्रदर? हाय फॉर गेमिंग एंड कोडिंग जस्ट बेटर या लाइक भाई कॉन्फ़िगरेशन बताओ हर्ष भाई, लाइक 5800H या 4800H या 6800H भाई, कॉन्फ़िगरेशन बताओगे थोड़ा सा हर्ष भाई। इन मोर इस 8GB भाई आनंद शंकर भाई देखो, अगर DDR4 रैम है तो आपको 3000 में मिल जाएगी भाई DDR4 रैम 8GB की, जो आप स्टिक कर सकते हो। तो 6-7 हज़ार रुपये ज़्यादा स्पेंड मत करो, जस्ट बाय अ लैपटॉप विद 8GB रैम एंड देन बाय वन मोर 8GB stick and go to a Asus service center nearby and just like inside that RAM you will be able to see how good that laptop performs। हाँ भाई मैं सिंगल PC स्ट्रीम कर रहा हूँ शंक भाई। विकास कार्तिक ब्रो भाई कौन सा स्पेसिफिक मॉडल है? बहुत सारे मॉडल आते हैं भाई, तो थोड़ा अगर आप बताओगे तो मैं बता पाऊंगा भाई। विकास भाई भाई लीजन 5 बहुत अच्छा है भाई, बट आप कौन सा 5800H वाले की बात कर रहे हो वो भी अच्छा है, 12500H वाले की बात कर रहे हो वो भी अच्छा है, बट लीजन की सर्विसेज के बारे में भाई बहुत सारी कंप्लेंट आई हैं मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे। तो भाई मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आपको आउट एंड आउट वो लैपटॉप लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके ये एरिया में आप उसकी सर्विस अच्छे से करा सकते हो, ऑप्टो से सर्विसेज अच्छे से मिल सकती हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट भाई। A15 भाई अंडरवर्ल्ड गेमिंग भाई डेफिनेटली बहुत अच्छा लैपटॉप 5900H। अगर 1 लाख का आपका भाई मैक्स बजट है तो आप डेफिनेटली उसके साथ जाओ। थर्मल थोड़े से हाई जाएंगे, बाकी परफॉर्मेंस बहुत सही है। गेम्स लाइव हेलो ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन ब्रो। एंड गाइस बिफोर यू लीव, before you any one of you leave or any one of you just is a personality construct. like before I forget that guys, it's a humble request from my end guys, if you have just joined the live stream guys, please make sure ki you are hitting that like button because it will help my live stream reach out to other people and it will help my video to the live stream to reach out to other people, as well as YouTube will recommend my videos to other people as well. So please make sure that you are hitting that like button to help me, like button of this video to help me out. Also if you are new to the channel guys, please do check my other content out, and after that if you like my content you can definitely, you are more than welcome to subscribe to my channel, and because that's gonna help me out a lot as well. भाई 16GB भाई जावेद भाई हमेशा भाई लाइक 16GB विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट जावेद भाई विदाउट एनी लाइक, अगर वो डुअल चैनल में 16GB रैम तो भाई बहुत 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 ज़्यादा करेगी आपको हेल्प आउट, और स्पेशली आजकल हर एक गेम में 16GB रैम तो लाइक नेसेसरी है। गेम्स लाइव ब्रो वंस अगेन हाई ब्रो भाई कनेक्टिंग भाई लाइक सीरियसली भाई इट्स माय प्लेजर एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वन ऑफ द कांस्टेंट मेंबर्स ऑन माय लाइव स्ट्रीम सिंस लास्ट 3 or 4 weeks, and I'm extremely happy that you are here, and I'm extremely like humbled that I was like humbled by your message bro, that, and I'm extremely thankful to you that you asked all these questions and I was able to help you out, because it is something that I really want to do much more to help you all out, and like everything else is secondary. The main thing is that I should be able to help you all out. That is my priority. Oh, Cryptic Zion bro, thank you so much. Cryptic Zion bro, thank you so much brother for your kind bro. It really means a lot to me. हर्ष bro आपका मैसेज आपने रिट्रैक्ट क्यों कर लिया? I'm so sorry. भाई बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो भाई I have to miss out on some kind. भाई मैंने Far Cry 6 खेला, ठीक सेटिंग नेवर टच। That's what you're saying. Prove it.
Leon said, bro, why, bro? It should definitely reach 60 FPS, bro. I can touch 60 FPS without any issues on my laptop. Your chip slot and your brain. Max-switch BIOS और Max-switch सॉफ्टवेयर इसका क्या मीन है? Short circuited you. कौन सा बट भाई Max-switch software is always much better than Max-switch BIOS, because if Max-switch BIOS you have to like go to the open up the BIOS before the system boots up, and then go inside and then just change the Max-switch change the Max-switch, sorry, change the settings and change switch the Max-switch, enable the Max-switch from BIOS. Whereas in case of software you have to it will be available inside a software. Like for Asus it is under Armory Crate, and for Ryzen it is under Vantage software. So it is much easier to switch between the different modes of enable the Max-switch or disable the Max-switch. So definitely go for Max-switch in software. It will definitely help you out a lot more. Will be much more helpful for you. Okay, under 75 Pro Anand bhai, definitely so it's one of the best laptop that you can get for that price, because it is coming with a 8 core 4800H. The only thing that I'm gonna say that if you are not buying a 16GB variant, just make sure that you are getting an additional 8GB stick, DDR4 stick. That's You're one. asking too much from an old timer like Vic. 8GB more, one more 8GB stick, so you can have dual channel 16GB RAM. That's gonna help you in terms of performance. And good night, Ritesh bhai. Thank you so much for joining in, bro. It really means a lot to me that you were here. And Hare Krishna bhai. And bhai, happy Independence Day to you as well, bhai. And then he died. ओके भाई हर्ष भाई, थैंक यू सो मच भाई. आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट हर्ष भाई. आप क्वेश्चन पूछिए, बट क्वेश्चन को रिट्रैक्ट मत करना. मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा आपके. थोड़ी देर में रीड करूंगा, लेकिन रीड जरूर करूंगा. Small hint of death. The कनेक्टिंग एरर भाई. You subscribe, thank you so much for that, or you like the live stream. I don't know which one you're talking about. I could be dead already, right? Not something to focus on. भाई डेफिनेटली क्रिस बल्सार भाई, प्लीज डालो भाई. 140 bot RTX 140 bot is definitely worth the 20k that you're gonna spend, because your laptop will definitely last one and a half year more if you are spending 20k less. और भाई अभी जो लैपटॉप मिल रहा है क्रिस भाई, आप मेरे डिस्क्रिप्शन चेकआउट करोगे तो मैं A17 की लिंक डली हुई है, बेस्ट लैपटॉप अंडर 120k 125k. A17 की लिंक डली हुई है, उस पर चेक करोगे तो 1,14,000 में मिल रहा है वो लैपटॉप फ्रॉम वन ऑफ द सेलर्स. So to speak. Kostal Lavane bro, that's so good to hear, man, that my stream is being pushed by YouTube to all of the people who have been searching about the laptops or the TUF A15. So thank you so much for joining in, mate. It really means a lot to me that you all are here and you all are joining in Got one more thing. my live streams, and I'm able to help you out in one way or the other. Vic pulled this out of your skull. Cherry Junior bro, you have the 1440p model or the 1080p model, bro? Just tell me a bit more details. डुअल चैनल मतलब भाई देखो, 2 स्लॉट रहते हैं रैम के, तो दोनों स्लॉट में एक रैम, मतलब 8GB की एक स्लॉट में, 8GB की एक स्लॉट में. तो डुअल चैनल में क्या परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है. अगर आप एक ही स्लॉट में 16GB लगा दोगे तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी. गुड नाइट वंस अगेन भाई रितेश भाई. Good night, V. थर्मल ज़्यादा जाएगा तो अच्छा नहीं भाई. मैं सही बताऊँ, अंडरबेड गेम पर भाई थर्मल ज़्यादा जाएगा तो अच्छा तो है भाई, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टेंशन देता है. कई लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं कि भाई 90 डिग्री टेम्परेचर है, ओ माई गॉड व्हाट आई एम गोना डू दिस और दैट. तो उस केस में क्या होता है कि भाई you will not have a peace of mind, and hence in that case you will feel like, oh my god, what I have bought for 1 lakh rupees. तो भाई प्लीज गो फॉर अ लैपटॉप दैट विल गिव यू मेंटल पीस. इफ आपको लगता है कि 90 डिग्री ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो डोंट बाय A15. अगर आपको लगता है कि भाई मुझे टेम्परेचर दिक्कत नहीं है, मेरा लैपटॉप चलना चाहिए, परफॉर्मेंस सही मिलना चाहिए, तो A15 इज द बेस्ट डील फॉर यू. एंड लुक who's here, ट्रायल ब्रदर इज हियर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, मैन. Like it's really great trial bro, but definitely there are some there are some optimization issues, especially when we are swinging through the city. If we are inside a building, there aren't an issue, but definitely there are some performance issues, and I think they will be fixed with future updates. Better thermal, that's why. Okay, like yeah. Then it's totally fine, because Dian bro, you know, I think with Intel you should underbolt your system and not disable your turbo boost, because Intel laptops have like lower base clock speed. So once you disable the turbo boost, the base clock, the CPU remains at the base clock speed, and since Intel have like lower base clock speed, the disabling the turbo boost is not the best option for Intel laptop. Just underbolt your laptop, it will help you out with the temperature. Mr. Anonymous bro, I don't have GTA 5 installed on my system bro, because I don't have any space left. Fucking ghost off.
Which gaming laptop runs a track record of less hardware decision? MSI, because bro, without a shadow of doubt, MSI has the least number of hardware issues. But the thing is that MSI doesn't have enough service centers in India, like at least not to an extent where I can recommend it to you guys. Personally, for me, MSIs are the best performing laptop, no matter which laptop you get. Like especially the GP series, not the GL series or the GF6 series, thin series. But the service center, like as there aren't enough service centers, you always want to feel like that. You always want to feel that once if there is some issue, you might be you might not be able to get the best after sales services, and you will be in trouble then. कनेक्टिंग है वो, थैंक यू सो मच कनेक्टिंग है ब्रो प्राइस भाई हेल भाई मेरे पास 1440p वाला मॉडल है, RTX 3060 मॉडल विद 140 वॉट 1440p डिस्प्ले, 165 हर्ट्ज डिस्प्ले, DCI P3 100% डिस्प्ले, RTX 3060 140 watt, RTX 3060 140 watt, and Ryzen 7 6800. It costed me 1,43,000. It costed me around 1,43,000, and I bought it from Asus exclusive store. It is still not available online on Amazon or Flipkart. परफेक्ट रहेगा हर भाई, कोई इशू नहीं होगा। कोई आप लैपटॉप देखो, कोडिंग में भाई इतना ज़्यादा हैवी टास्क नहीं होता है, तो अगर आप गेमिंग लैपटॉप लोगे इट विल बी मच मोर, इवन इफ यू बाय अ बेसिक लैपटॉप इट विल बी मच मोर इनफ फॉर गेमिंग लाइक कोडिंग। लेकिन आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो भाई डेफिनेटली इट विल ऑलवेज बी अ बेटर थिंग टू गो। मैंने 100% भाई आपको आंसर दे दिया भाई। And guys, a lot of questions are coming up, so I'm so sorry for that I have to skip some questions, and I'm just gonna start from Mr. N. Like, God be respectful. Please GTA 5 bro. You know Paler? No bro. Rafael फंसा है bro. What do you mean Paler bro? I don't know. See you never, asshole. I am automotive design. Stick some iron in your mouth and pull the trigger. Bro, I'm automotive design student, so please search me. Bro, Aselo bro for 1.4 lakhs. Since you will be much more into 3D designing, I think I will personally suggest you to increase your budget by 14 more K and go for Acer Predator Helios 300, the 127WH RTX 3060 model. That is in my description, it is one of the best laptop that you can buy at 1,55,000. That will be my personal recommendation to you. If you can increase your budget, you can definitely just say that in the comments, and I will guide you further. And if you can't, you should tell me that, and then I will recommend you something at around 1.4 lakhs. It should be good enough, Bashim Kalal bro, because it's a really powerful laptop bro. But hopefully the Lenovo Legions after sales services are good in your area. I don't have GTA 5 on my system, bro. I'm so sorry for that. Bro, definitely worth it, hell, but go for the 75K model that comes with 16GB RAM. It will be much more worth it. Even if you are going for the 8GB variant, bro, please do upgrade the RAM. Buy one more 8GB RAM for 3K and just upgrade your RAM to 16GB, and you will be able to see how good that laptop performs, because single channel 8GB RAM is not good enough for gaming or for productivity. No issues underboard gaming bar bro. Thank you so much for joining in, brother. Ansani bro, totally depends which specific model you are talking about. Just tell me the models, the processors, and I will try to help you out. Thank you so much for helping out, Manas bro. It really means a lot to me, bro. Okay, BR on 60 likes. Thank you so much for that. I'm just skipping some comments, and I'm gonna go. Vivek Shan bro, blue, I purchased the Legion 5. Many congratulations to you, Vivek Shan bro. Hopefully you are enjoying your time with the Legion 5 that you have just bought, bro. Many congratulations. It's one of the best laptops that you can buy, for sure. But hopefully you research about the after sales services, because there have been some issues where some people have faced after sales services issues with Legion 5. नहीं होगा भाई. 12400F is a really powerful CPU, but you should definitely check, because it has more than enough cores, so it should be good enough for. By Roblox भी नहीं है Geno bro. I'm so sorry, I don't have Roblox on my system installed. Yeah bro, Chirag bro, if you want a powerful CPU, then definitely IdeaPad Gaming 3 is the way to go. Kuku Jadu bro, thank you so much for joining in, man. How are you, brother? LinkedIn ID won't be in the description. Just search Shubham Kaurab on LinkedIn, and you might be able to find me.
Moz Asif bro, definitely. If you are not into gaming, for 3D rendering it is much more like it. For next 5 to 6 years, you won't have any issues with Legion 5. Oh, bhai, like many congratulations to you, Harith bro. Which laptop you gonna buy? Just tell me. Oh my god. Shit. Hopefully, I just need to check. Okay. Copyrighted music get disabled, so that's great. I thought like I might get a strike. Okay, I have to exit him. नहीं करना चाहिए भाई साहिल क्योंकि 12400H is already more than powerful enough. So it shouldn't bottleneck RTX 3070 Ti. Which laptop you are gonna buy, Harsh bhai? Just tell me. Gokul Chandu bro, this laptop, the TUF A15 this year that have released have 10% better performance than the Legion that you're talking about. Oh my god, why did I just slapped? So now that's the case. If you want a better performing laptop, I think TUF A15 2022 is the way to go. If you want a better thermal laptop, like overall thermal, because in terms of like in a CPU sensitive, in a GPU sensitive game, I think TUF A15 might still be a better thing, a better laptop to get. But if you want to play games like Warzone, Valorant, and like mainly Warzone and Valorant, and Battlefield, so the laptop that are really CPU sensitive, then I think Legion 5 is the way to go. सलाम भाई, आज मैंने ACER NITRO 8GB RAM वाला ऑर्डर, प्लीज रिव्यू दो भाई. इशू तो नहीं है भाई. देखो सही बताऊं भाई, अब्दुल अहद ब्रो भाई बहुत अच्छा लैपटॉप भाई. मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि भाई इट इज़ अ बैड लैपटॉप या फिर ये वो नहीं बोलूँगा. इट इज़ अ गुड लैपटॉप. बट उस लैपटॉप में का एक इशू है भाई, उस लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी लाइक नहीं है उतनी अच्छी जितनी अच्छी होनी चाहिए. तो इट इज़ वन थिंग दैट यू शुड बी वरीड अबाउट. उसके सिवा आई सीरियसली डोंट थिंक कि उस लैपटॉप में कोई इशू. बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है. परफॉर्मेंस थोड़ी कम मिलेगी जो लीजन लाइक प्रेडेटर है और जो मेरे पास लैपटॉप है उससे. और भाई आपने जो 8GB रैम वाला ऑर्डर किया भाई, उसको 16GB रैम का लेना अब्दुल भाई, नहीं तो 8GB रैम में आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी गेमिंग में. तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई अगर आप वो लैपटॉप बाई किया है एंड इफ़ यू हैव 8GB रैम तो उसको आप 16GB में अपग्रेड कर लो, क्योंकि अदरवाइज यू विल फील लाइक कि आपका जो RTX 3060 है वो 95 वॉट तक नहीं पहुंच पा रहा है. Legion 5 is good. Gokul, Legion 5 is a great laptop if for you, if you will search about the after sale services. If the after sale services in your area for Legion, like the Lenovo laptops are good, you should definitely go for the Legion 5 without any issues. But if the services end great, I think going for other brands is totally fine as well. Yeah, Manas bhai, definitely. But the thing is that I think, in my opinion, bhai, देखो, both Lenovo and MSI, the after sale services are not good enough. Please do search about the after sale services, guys. Because देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, there is something called like you have to change your thermal paste after 6 or 7 or 8 months. Okay, so like if you are using a third party, like if you are using third party to change your thermal paste, your warranty will get void and you won't be able to get all the benefits for. Why would I do that? For your. I am the one who saved your life. Haven't managed to get my head straight yet. Okay. Not after everything that happened. You won't be able to get the after sale services once you open it up outside. So that's what this is what I'm gonna suggest you, that before you buy any of the laptop, please do search about the after sale services. If they are not good enough, I won't suggest you to go for those laptops. Like no matter which brand you are going with, sometimes the performance can be managed, but sometimes the issue is that like you if you don't get the after sale services, you will always be worried about the health of your laptop.
like bro, definitely you will get less FPS on QHD version, bro, than the FHD version, because you will be playing on QHD. Apart from that, there aren't any issues. The only issue that you can face with like the only thing that you can think is that, but once you, like, if you want to play any game at 1080p, it might look blurry on QHD screen. By the branch, bro, like personally, for the initial 1 or 2 days, even I was facing a issue where my GPU was not going over 115 watts, even at 1440p. So and 1080p. So like after that I got a BIOS update, and since then everything is working fine. Like try to, like that's why I told you, like if you are on 1440p, try to just disable the turbo boost for your CPU, and then try to see if your GPU can reach 140 watts or not, and then try to take a decision. भाई A15 2020 ओके भाई, लाइक हर्ष भाई, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। ये 75K वाला मॉडल ले रहे हो भाई। अगर ये लैपटॉप बाय कर रहे हो तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। अगर लिंक ना भी हो डिस्क्रिप्शन में भाई, तो किसी भी लिंक से आप ओपन कर लेना अमेजोन, एंड देन बाय द लैपटॉप। भाई कोई भी लैपटॉप बाय कर लेना जो भी आपको करना है हर्ष भाई, उससे भाई आपको एक भी रुपये ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा किसी को भी। जो लैपटॉप की प्राइस है उसी प्राइस में मिलेगा लैपटॉप, लेकिन अमेजोन के एंड से मुझे कुछ कमीशन देगा, जिस कमीशन के थ्रू मैं और भी लैपटॉप बाय कर पाऊंगा इस चैनल के लिए, और जो जिसके थ्रू मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा हेल्प आउट करूँगा, तो भाई कर पाऊंगा। तो इफ़ यू कैन डू दैट फॉर मी, इट विल बी रियली गुड फॉर मी एंड फॉर माई चैनल एज वेल। सो दैट्स द ओनली हम्बल रिक्वेस्ट दैट आई एम गोना से और डू और मेक टू यू डू। भाई डेफिनेटली भाई 90 वाट और 50 वाट और में भाई बहुत डिफरेंस है भाई। 54 वाट और में 2.5 आवर का बैटरी बैकअप मिलेगा, 90 वाट और में 4.5 आवर का, लाइक 6 और 7 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल सकता है। बिकॉज GC ब्रो भाई, which ACER NITRO 5, like can you tell me the configuration? I bought this laptop, the 1440p, the laptop with 1440p display, 165Hz display, DCI-P 300, 100%, that is 120% sRGB for 1,43,000. After that depends on location, so not fair to assume if it will be like that's why I'm saying, Manat bhai, like that like if you are from a top 5 metro cities, like the tier 1 cities, you won't have any issues. But even if you purchase MSI laptop, if you are from tier 2 and tier 3 cities, you should definitely look for the services first, after sales services first, and then buy the laptop, because not everyone will be able to like budget a Bombay and get their laptop fixed by staying in Bombay. गेमिंग गीक, बट कोई और इशू तो नहीं आएगा ना लॉन्ग टर्म। भाई बिल्कुल भाई अब्दुल भाई, आज भाई कोई भी इशू नहीं आएगा, बस उसकी रैम 8GB और अपग्रेड कर लेना, यू विल बी मच हैप्पी। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी इफी है, तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में भाई थोड़ा जस्ट यूज योर लैपटॉप केयरफुली एंड इट विल वर्क फॉर श्योर, लाइक फाइन फॉर श्योर। द बिल्ड क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट भाई। बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा इशू आ सकता है अगर आप उसका प्रॉपर ख्याल नहीं रखोगे तो। भाई दिव्यांशु ब्रो, मैंने बताया आपको, मुझे बायोस अपडेट आ गया था फर्स्ट 1 और 2 डेज बाद, उसके बाद एवरीथिंग वाज फिक्स्ड फॉर मी। असोलो ब्रो डेफिनेटली भाई बिल्कुल बेटर है। अगर 1,54,000 के साथ जाओगे आप एसर प्रेडेटर में भाई, तो सब चीज़ें बेटर, लाइक बिल्ड क्वालिटी भाई सेम है भाई, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी सेम है। परफॉर्मेंस डेफिनेटली हेलियोस की बेटर है, क्योंकि उसमें थर्मल्स बेटर मैनेज्ड हैं, i7 12700H के। भाई मैं सही बता रहा हूँ, सजेस्ट करूँगा आप उसको बाय कर लो, क्योंकि भाई 140 तक आप जा ही रहे हो, और आप देखो एक कोई ऐसा लैपटॉप लोगे जो कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो, अगर आप इंटेल के साथ जा रहे हो तो भाई पर्सनली मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप इतना महंगा लैपटॉप ले ही रहे हो, गया मर गया भाई, तो जस्ट गो फॉर द प्रेडेटर हीलियो। भाई लिंक डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना मॉडल को, मेरी लिंक डली हुई डिस्क्रिप्शन में। लैपटॉप्स ओवर 125K जो डली है, सबसे ऊपर वाली लिंक है ये सब प्रेडेटर हीलियो की। राजकुमार वो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन मैन, इट्स लाइक बाई माई प्लेजर कि आई वॉज एबल टू हेल्प यू आउट। और मैं गेम नहीं खेल पा रहा हूँ सीरियसली, इतने सारे क्वेश्चन आने लगते हैं एकदम से भाई, तो समटाइम्स इट बिकम्स अ लॉट टफ फॉर मी, लाइक एक्सट्रीमली टफ फॉर मी टू आंसर। भाई गेमिंग चेयर भाई मैंने गेमिंग चेयर लिया था 20K का भाई, ग्रीन लाइक ग्रीन सोल का है, आई थिंक ग्रीन सोल का ही, आई थिंक दैट इज द ब्रांड नेम बता देता हूँ, नेम पीछे लिखा हुआ या ग्रीन सोल का भाई 20K में पड़ा था। अगर आप ऑफिस चेयर के लिए भी जाओगे तो कोई इशू नहीं है। गेमिंग चेयर मैंने इसलिए बाय किया था क्योंकि मेरे ऑफिस यूज में भी आता है, क्योंकि I usually sit on the chair for a long time, and hence I opted in for. That will not happen anytime soon. And so what? If you intend to leave, you must re-enter the ring. The bell has already tolled. Sorry, I have to like. I am waiting. And that's why I opted for the gaming chair. You can go for the office chair as well. कोई issue नहीं होगा भाई।
भाई 17 इंच लैपटॉप थोड़ा सा हैवी रहेगा 15 इंच के कंपैरिजन में। तो अगर भाई आप 17 इंच लैपटॉप के साथ जा रहे हो तो भाई देखो मेरे हिसाब से कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि अरे भाई यार मैं 17 इंच लैपटॉप के साथ जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा हैवी रहेगा तो थोड़ा उसके बारे में सोच के भाई थोड़ा सोच समझ के चलना उसके साथ। और बाकी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा ही फर्क है। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट मानस भाई, thank you so much for your help Manas bhai. It really means a lot to me, like since there have been a lot of people who are joining our live streams, it becomes a bit tough for me to answer them all, and sometimes like repeat the things that can like help me that can help the channel out and can indirectly help our audience as well. So thank you so much for that brother. भाई कुकू जादू बिल्कुल भाई वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है भाई अभी भी भाई, सेंटर नहीं है और इंटरनेशनल वारंटी है, दैट्स व्हाई लिटिल वरीड यहाँ पर। भाई एसर नाइट्रो 5 2.3 लाख का भाई, ये थोड़ा ज़्यादा है भाई। और अगर भाई सर्विस सेंटर नहीं है भाई तो भाई मैं सजेस्ट नहीं करूँगा अब्दुल भाई, क्योंकि आपको भाई कूलिंग पेस्ट तो चेंज कराना पड़ेगा और आप कूलिंग पेस्ट थर्ड पार्टी चेंज कराओगे तो आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी। Definitely भाई परवेश ब्रो, definitely this is the model that I'm talking about, best 100k laptop for sure. TUF A15 like in terms of performance it is one of the best laptop that you can get under 100k 1 lakh. टेम्परेचर हाई साइड है परवेज ब्रो, डेफिनेटली भाई हायर साइड रहेगा भाई। और टफ में तो वैसे भी टेम्परेचर हायर एंड पे ही रहता है भाई CPU का। तो अगर भाई उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो भाई कि आपको टेम्परेचर भाई 9 डिग्री से ऊपर जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे देगा, तो फिर भाई बाय मत करो वो लैपटॉप और फिर कोई और लैपटॉप देख लो भाई। उसी प्राइस रेंज में आई थिंक नाइट्रो 5 भी मिल जाएगा आपको फॉर अराउंड 1 लाख फॉर अराउंड 97 और 98k। तो भाई आप वो बाय कर सकते हो अगर टेम्परेचर को लेके बहुत परेशान हो तो। अगर आपको भाई लाइक इफ़ यू आर नॉट वरीड अबाउट द टेम्परेचर देन भाई डेफिनेटली जो भाई हमारा टफ है फिर Ryzen 9 वाला वो बेस्ट परफॉर्मिंग लैपटॉप है, उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, उससे बेटर परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता वो किसी भी लैपटॉप में अंडर 1 लाख। भाई करेंटली मेरे पास अभी एक सिंगल लैपटॉप है दैट टफ A15 2022। अभी मेरे पास नाइट्रो 5 भी पड़ा हुआ है मेरे साइड में जो RTX 3050 Ti वाला, जिसका अभी मैंने वीडियो डाला 3050 Ti वाला जो 11800H i7 प्रोसेसर के साथ आता है जो मेरे कज़न का, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। भाई पंकज भाई मेरा जो लैपटॉप है 1440p डिस्प्ले के साथ आता है और उसमें 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले DCI IP 300%, उस वजह से वो 1,43,000 में मुझे पड़ा था Asus सर्विस सेंटर में। अरे भाई अब्दुल भाई अ वेरी वेरी बिग शाउट आउट टू अब्दुल भाई। और भाई इवन दो आई एम नॉट दैट बिग अ यूट्यूबर एंड यू ऑल आर लाइक ब्रदर्स टू मी, तो भाई इट्स माई I'm quite happy that you guys think that I can give you shout out, but like seriously I'm a very small content creator and I try my best to help you all out. And bhai a very very big shout out to Abdul Ahad bhai, and thank you so much for joining in Abdul bhai, and thank you so much for asking all the questions. भाई ब्रो मैं भी एक ईयर से तुम्हारे प्रीवियस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट नॉट गुड एंड नॉट गेटिंग एक्सपोजर। कुकू ब्रो भाई थोड़ा सा वेट और करो, आई थिंक भाई 1.5 ईयर्स के बाद स्विच करना। मैंने भाई 1 ईयर के बाद स्विच किया तो थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने। 2 ईयर बाद करना, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज एंड बी रेडी फॉर द इंटरव्यूज एंड ट्राई टू अप्लाई फॉर द अदर कंपनीज एंड ट्राई टू सी हाउ मच लाइक कहाँ पे हो आप, कितना पानी में हो भाई, एंड दैट विल हेल्प यू आउट। No issues हर्ष भाई, if you gonna buy it from the shop भाई you have my best wishes bro. Like I was just saying कि अगर भाई आप ऑनलाइन खरीद रहे हो तो then I am suggesting that अगर आप शॉप से खरीदोगे no issues भाई, definitely go with your gut feeling। और अगर आपके पेरेंट बाय कर रहे हैं लैपटॉप तो definitely ask them कि वो कहाँ से चाहते हैं आपको लैपटॉप बाय करने के लिए। 30 seconds short bro, just check my description out। Best laptop under 60k would be either the ACER NITRO 5 or the HP Pavilion gaming laptop. You can go for either both of these laptops are the best laptop that you can get under 60k. So what? Specific review बनाओ
bounce at Yorinobu's. भाई डैड भाई एक्चुअली भाई लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भाई मैं सही बताऊं कि आई हैव टू बाय द लैपटॉप थ्रू माय ओन मनी. In a neutral location, certain भाई मेरे खुद का पैसा खर्च करके मुझे लैपटॉप बाय करना पड़ता है एंड दैट्स आई एम नॉट एबल टू परचेज 5900 HX क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो 2022 वाला मॉडल बाय कर लिया है. तो अगर भाई मुझे अगर भाई if companies would have been sponsoring me I would have loved to do a review of that unit like in particular, but by since I'm not able to purchase that laptop I can't make a specific review about that, so I'm extremely sorry for that. Akshit Antar Gyan bro, bhai, go for the 16GB variant for 75k and it is one of the best laptop that under 75k you can buy. If you can increase your budget to 85k I can suggest you something different that will be much better. People like Anders Hellman. Aman bhai, it's a good laptop, ACER NITRO 5 with i5 12th generation, but you need to upgrade the RAM to 16GB. So just buy 8 more GB DDR4 RAM for 3 more K, and that laptop gonna cost you around 83k, and then that laptop will be performing like really great for the price. तो हमारे इकोनॉमी डाउन है, नॉर्मल टैग रहता है, मैंने डिस्काउंट पर बाय किया है और सॉरी भाई अब्दुल भाई कोई बात नहीं भाई, लाइक आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. Every nation goes through the hardships and by hopefully Pakistan will recover from everything and you guys will be able to do much better and hopefully the prices will come down really soon. You have my best wishes brother and hopefully you will have great time with your ACER NITRO 5 bro that you have bought. Fucking suckers. 1 lakh which is better. Hey, I was listening to that. Shut up. भाई A15 by very big margin आर्यन प्रशांत ब्रो, क्योंकि उसमें RTX 3060 मिल रहा है 95 वॉट वाला और 2GB एक्स्ट्रा VRAM will help you out a lot more. बेद पटेल भाई लाइक बिच CPU बिच GPU भाई बेद भाई गुरु भाई गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं थोड़े से स्किप कर दूंगा भाई, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. भाई ब्रो मैं बोल रहा हूँ कि आपको साउट आउट चाहिए. आई एम आस्किंग इफ ओके ओके भाई यू कैन डेफिनेटली गिव मी भाई if definitely you can give me a shout out bro, it will definitely help me out bro. Thank you so much for even considering that bro. To give me a shout out it will really means a lot to me. Like this is first time that I have heard about that offer, so thank you so much for that. I initially I thought कि आप बोल रहे हैं कि मैं shout out दूँ, तो भाई even मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं है कि मैं shout out दे पाऊँ, लेकिन अगर आप दे सकते हो आपको स्टोरी में shout out, it will definitely help me out a lot more. No issue, 30 second shorts bro, it really helps me. I'm extremely thankful to you कि आपने live stream को join किया है. You asked all the questions that I was able to help you out with. हाँ भाई स्पाइडरमैन नहीं भाई कब आएगा भाई. गुरप्रीत संधू भाई मेरे पास RTX 3060 95 वॉट वाला लैपटॉप मेरे साथ नहीं है, तो आई कांट मेक अ रिव्यू ऑन दैट पर्टिकुलर लैपटॉप, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट भाई. If she could not help you before, she will not manage. But definitely Rajasthan, it is much more than enough. But if you can increase your budget, I think I will suggest you to go bit 4800H if you can go. But if you just want it for programming, 4600H and 6050 laptop That Parker woman. will be much more than enough. भाई इतना सारा इसमें इतने सारे कमेंट गिरी हो रही है भाई, सीरियसली आई रियली डोंट वांट टू डू दैट भाई. मैं गेम ही नहीं खेल पा रहा हूँ ब्रो. FPS 30 पे ड्रॉप क्यों कर रहा है सागनिक पटनायक ब्रो? मेनली बिकॉज भाई मैं अभी डिस्प्ले कैप्चर यूज कर रहा हूँ जिस वजह से भाई मैं आई एम बेस्टिंग लाइक आई एम लिटरली माय FPS इज reduced by around 25 to 30 FPS in some of the cases. And I'm extremely sorry. I seriously don't know like why this game doesn't support the game capture. This is Cyberpunk guys. For several days, I collect. Love Commando Gaming bro. मैं भी टफ गा भाई. आप टफ लेने वाले हो क्या लव भाई? Ajmeen Hyder bro. Hello bro. Thank you so much for joining in brother. And brother, the TUF A15 that I have TUF A15 2022 that I have one like 1440p display with RTX 3060 and DCI-P 300%. So this model costed me 1,43,000 from the Asus exclusive She store. saw me as Saburo-sama's killer. भाई प्लीज हेल्प करो लीजन 5 Gets wind of most भाई. MSI GP लेपर्ड भाई बहुत बेटर है लीजन 5 से, RTX 3060 वाले 3070 वाला. बट आफ्टर सेल सर्विसेज अगर आप भाई मेट्रो सिटी से नहीं हो तो मैं शायद लीजन सजेस्ट कर दूंगा. बट आप सब आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में पता कर लो लेनोवो की और I cannot stay here. लेनोवो. Do what you want. When till Zapper dump.
भाई क्या ही हो रहा है भाई, सीरियसली आधे घंटे से खेल रहा हूँ, कोई मतलब का नहीं खेल रहा हूँ और भाई मैं Bulls and filth. And some yeah guys, please nuts. make sure you are hitting that like button because it's definitely gonna help me Myself out. could still understand 64 people are we watching the should live be stream as of warriors this a moment. collision course with chaos. I know, But hey, at least Rogue's and still it's alive. definitely gonna help me out, and my live stream will be able to reach out many more people if you guys You know, will you got like my some live nerve. stream. So First you have to kill me, I just wanna then you thank be you my all pal. in advance like nothing for hitting happened. that like button for me. You know you don't gotta speak out loud to talk to फिक्स people. प्रो 70 किस लो, बिल्कुल भाई ये 17 ले लो, कोई इशू नहीं है अक्षत भाई, लेकिन आपको भाई उसको 8 GB रैम को 60 GB में अपग्रेड करना पड़ेगा नेक्स्ट कुछ मंथ में, क्योंकि 8 GB रैम में आपको भाई उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, जस्ट अपग्रेड रैम टू 16 GB। तो भाई आप कुछ पैसे सेव कर लेना नेक्स्ट कुछ मंथ में एंड देन गो फॉर बाय 8 more GB रैम एंड देन Any friends you had are either dead just or so old they're just like play your games and you will be able to, you will be really happy with how good that laptop so performs. you fucking know Rogue. What do I say to her? भाई कैजुअल गेमिंग और उसके लिए भाई OLED क्यों ले रहे हो भाई ऋषभ भाई, अगर गेमिंग करनी है भाई, अगर और वीडियो एडिटिंग भी करनी है तो आई थिंक इट्स मच बेटर टू, भाई ये कितना प्राइस में पड़ रहा है ऋषभ भाई, ये बताओ पहले तो मुझे प्राइस क्या पड़ रही है इसकी भाई। Seen your memories. एंड गाइस आई एम सो सॉरी कि मुझे इतना कुछ भाई लाइक आई एम मिसिंग आउट ऑन सम ऑफ द कमेंट। ऋषभ भाई किस प्राइस में पड़ रहा है आपको वीवो प्रो OLED? Oh, thank you so much, Royal Khalsa bro. Bhai, it really means a lot to me. Thank you so much for your kind words for me, bro. Harsh, okay, bro. Like that's really great, Harsh, bro. And hopefully you will be, which like since you have already told me one of the laptops, hopefully, like both the laptops that you're gonna get, you will be really satisfied with their performance, and you will be extremely happy that you made the decision to buy those laptops. So guys, I'm getting like FPS around like 25 or 30 because I have to use display capture, and I'm like right now I will just close that game. I have to use the display capture which because of which I'm losing on around like 20 or 30 FPS in some of the games. So guys, just see the games that I have on my screen and you can just tell me which game should I play next. I think I'm gonna play RDR2 next, but you can tell me which game you want me to play next. And guys, hopefully my head is not blocking. So like behind my head there is Assassin's Creed Valhalla Cricket 22 as well. So you can like you can see the Dying Light 2 already. Boss Dogs is here. I think Far Cry 6 is uninstalled because I didn't had any space. So you can just tell me which game should I play and I will definitely try it out. भाई RTX 3060 डेस्कटॉप वाला 29K में ब्रो भाई बहुत ज़्यादा सही डील है भाई कहाँ से मिल जाती है, मुझे भी डील दिलवाओ भाई, ऐसी मैं भी बाय करता हूँ भाई डेस्कटॉप के भाई कार्ड्स भाई। 55 कैन आई गो फॉर टफ F15 फॉर गेमिंग? सूर्य देव भाई 55K में भाई कौन सा मिल रहा है लैपटॉप F15? भाई A15 की बात कर रहे हो आप, 4600H और R1650 वाला, या फिर कोई और दूसरा लैपटॉप? सूर्य देव ब्रो भाई बढ़िया लैपटॉप बता दे भाई अंश भाई सबसे बढ़िया लैपटॉप है, आप ACER NITRO 5 खरीदो, ACER NITRO 5 खरीदो आप भाई, और ACER NITRO 5 2022 वाला उसकी लिंक डली हुई डिस्क्रिप्शन में, द बेस्ट लैपटॉप अंडर 80K कैटेगरी में पहला लैपटॉप जो डला हुआ वो बाय करो। उसके बाद उसमें भाई एक 3000 रुपये की DDR4 रैम लगा लेना, तो आपकी रैम कितनी हो जाएगी 16GB डुअल चैनल में। उसके बाद वो जो लैपटॉप परफॉर्म करेगा ना भाई आपको मजा आ जाएगा, इतना बेटर परफॉर्म करेगा भाई। एज ऑफ दिस मोमेंट भाई कोई भी स्पोर्ट्स टाइटल नहीं पड़ा है मेरे पास, क्योंकि लाइक सीरियसली मेरे लैपटॉप में स्पेस ही नहीं बचा हुआ है भाई, इतने बड़े गेम्स इंस्टॉल्ड हैं भाई, क्योंकि भाई RDR2 और अगर मैं साइबरपंक इंस्टॉल करके रखे हूँ, वॉरजोन इंस्टॉल करके रखे हूँ, असैसिन क्रीड इंस्टॉल करके रखे हूँ, और तो भाई ये गेम ही पूरा का पूरा स्पेस खा लेते हैं भाई, मतलब यूज़ अप कर लेते हैं भाई। ब्रदर यू आर सच अ गुड रिसर्च एंड हम्बल पर्सन, व्हाट बिग like thank you so much Parabeshik bro, it really means a lot to me that my answer was like able to help you out, or like they were helpful to you in one way or the other, because like that's the only thing that I want to like being on YouTube, that's the only thing, and that is the only that is one of the priorities that I have, that I should be able to help you all out, and if I'm able to do that, there is nothing in the world that can make me more happy. Bhai Patel bhai, you have Patel Gaurang bhai, you have chosen a perfect laptop.
I can suggest you it. I can suggest that laptop to you any day of the week. So if you're going for that laptop, you'll be extremely happy to see how good that laptop performs, and you will definitely feel like that you are making a good decision by. And at 1.54 lakh, I think it is one of the best laptops that you can buy. Yeah, this laptop has a max switch streak, bro, and it costed me 1,43,000. Even if you're going for the any laptop in Asus category that have 6800H, Ryzen 6800H, or Intel 12th generation laptop, they will all will have a max switch. This year, they have implemented max switch across the board. भाई हेमंत भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला 1440p वाले मॉडल का भाई लिंक नहीं है क्योंकि वो ऑनलाइन मिल ही नहीं रहा है कभी। फोर द हॉराइजन बेबिक सन भाई पढ़ा नहीं है भाई सीरियसली भाई मैं क्या बताऊँ स्पेस का क्या हाल है वो भी मैं बता देता हूँ आपको भाई। आई थिंक देयर आर 2 M.2 स्लॉट लाइक वन लाइक जो अभी इसमें है वो Gen 3 SSD है और इसमें एक स्लॉट और है तो आप Gen 4 SSD लगा सकते हो, लेकिन इसके साथ जो आती है वो Gen 3 SSD है। Chetan Bore say, bro, considering all other laptops which have i7 12700H are launching around 1.5 lakh, I think F15 have a really competitive pricing. But I think when it comes to like the thermal management, I think other laptops are banning it because in case of like P cores, the temperature are going really high in F15 and hence is a thermal throttling. But it's case with other laptops as well. So like I think if you're going for F15 and not considering to buy AMD laptop, I think it is much better to go for either Acer Predator or Legion 5 i Pro for 1,54,000 or 55,000. Thank you so much, Manas bhai. Thank you so much for helping me out, bro. You have been phenomenal today, bro. Thank you so much for everything, man. भाई अगर 70K तक खरीदना है तो भाई A17 खरीद लो जिसके बारे में काफ़ी लोग बता रहे हैं, A15 खरीद लो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई। ऑन एसर भाई मैं सिद्धांत भाई मैं एसर प्रीडेटर 2021 बिल्कुल ही भाई आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि जिस प्राइस पे वो सेल हो रहे हैं इट्स मच बेटर टू गेट Asus TUF A15 2022 which comes with 6800H and RTX 140 board which will be like really good for 1350 Ti. I seriously don't know what is the pricing for the 1350 Ti model for Acer Predator. Can you tell me the pricing, Siddhant bhai, and I might be able to suggest you whether you should go for it or not. Shashank bhai, MSI GP66 is absolutely worth it to go to go for that price, but the only thing that is making me not recommend you that laptop is that MSI doesn't have the best possible after sales services throughout India. So if you are from a metro city, you won't have any issues with the after sales services. But if you are someone who is not from the tier 1 cities or the metro cities, you will definitely face some issues with the after sales services of MSI, and definitely you're gonna get your thermal piece changed after 6 or 8 months. And in that case, since MSI doesn't have the best possible after sales services, you might feel like that okay, I'm not able to get the best possible services. I should have chosen other brand. Sebam bhai, thank you so much for the 40, man. It really means a lot to me. Bhai, for 1.2 lakhs, bro, laptop, bro. Bhai, seriously, bro, Sebam bhai. Just like you don't want it for gaming. If that's the case, even then I will suggest you to go for Asus TUF A15 2022 that is costing around 1,14,000 on Amazon as of this moment. You can check the link out in my description. It is under the category of laptops under 125K, and it should be at the very end or at the very top in that category. It is costing around A17 model, costing 1,14,000. Comes with Ryzen 7 6800H, the 8-core 16-thread processor that can reach up to 4.2 GHz. And the other thing about that laptop is like it have 140 watt RTX 3060, so that will be really helpful for you, even though the color accuracy is not that great, but I think that is the laptop to go. आदित्य करण भाई मैं डेल G15 नहीं करूँगा सजेस्ट क्योंकि डेल G15 के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इवन विद 1350 कॉन्फ़िगरेशन. तो भाई इन दैट केस आई विल सीरियसली रिकमेंड यू टू गो विथ what do we say, the Asus TUF A15 with RTX 3050. It is a much better laptop. And guys, currently I'm playing at the max possible settings. As you can see, ये बार पूरा का पूरा खोला तो मैं max possible settings पे play कर रहा हूँ गेम को. So I'm just gonna play it for you guys. भाई MSI गौरव भाई MSI laptops can even perform better than 12th generation Intel laptops as well. 6800H से तो आराम से better perform करेगा.
12 जनरेशन इंटेल लैपटॉप से बेटर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि MSI का जो भाई लाइक जो बायोस वगैरह सिस्टम है वो बहुत परफेक्ट है, एंड दे ऑलवेज गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा 10% परफॉर्मेंस that will be really beneficial for you. So MSI laptops are the best performing laptop no matter what configuration you are talking about, but the thing is that MSI की आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उनको रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्रॉस ईयर में रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसमें मकसद नहीं है और उसका RTX 3060 भी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो मैं भाई क्रॉस ईयर नहीं करूँगा रिकमेंड। GP सीरीज या GE सीरीज दे सकते हो आप कि मीडिया फर्स्ट 3D वर्क विथ न्यू लैपटॉप 4 मिनट रेंडर LOL। व्हाट डू यू मीन विवेक मंडल ब्रो, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। भाई डेल G15 भाई मैं आकाश ने कि भाई सीरियसली बताऊं लास्ट ईयर वाले मॉडल इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा डेल G15। अगर आपके भाई कोई लैपटॉप और हो सजेशन में या बजट आप बता सकते हो तो मैं आपको डेफिनेटली कोई और लैपटॉप सजेस्ट कर सकता हूं, बट डेल G15 क्योंकि लास्ट ईयर वाले लैपटॉप के थर्मल बहुत ज़्यादा ही हाई थे तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता वो लैपटॉप इस साल भी, और जो भी मैंने देखा है वो उतना अच्छा नहीं है। तो एकांश दो लैपटॉप सजेस्ट टू गर्ल हु डजंट हैव अ क्लू टू व्हाट टू डू इन फ्यूचर विल बी गोइंग टू। And oh my god, she is going to NIT Allahabad. So first of all, Ekans bro, many congratulations to that girl. Whether be it your sister or your girlfriend or whoever she is, many congratulations to her. The second thing, for 65k bro, I will just tell the best laptop that I have just that I have noted down in my description. You can check the links out as well. So bro, for her, I will seriously recommend her to go with the Lenovo IdeaPad Gaming 3. It is one of the best deal that she can get. The processor is 6-core processor, 5600H and RTX 3050, 85 watt. She should be really happy with the purchase, and should that laptop will be powerful enough for her, like for her to use in the future as well. Yeah, but like if she doesn't want anything for gaming, I think Janbook OLEDs are good as well. Like I was suggesting that just with a perspective, where she have like enough CPU and GPU power, where if she is looking into like a 3D modeling and animation as well, that then it will be good enough. Yeah, bhai Saurabh this then bro, it's been a long time since I've seen you on one of my live streams. Thank you so much for joining in, man. Yeah, like it have 140 watt TGP, I know that for sure, but it doesn't have a mux switch. The build quality is not on par with other MSI laptops. That's what I know about Crosshair. I might have like by mistake have said that it doesn't have the most powerful RTX 3060 that I might have said by mistake, but Crosshair laptops doesn't have a mux switch, and they are costing around 1.3 lakhs, and for that price you are getting mux switch and other devices that are like basically costing the same. So I think, in my opinion, it's much better to go for a Legion or ACER Predator than for a Crosshair, because Crosshair can't be compared with the full-fledged gaming laptop. भाई SSD ही हमेशा लो भाई, HMC टेक्निकल ब्रो, SSD always helps out a lot. एकांश ब्रो माने भाई, थैंक्स फॉर हेल्पिंग एकांश ब्रो भाई। गाइस बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सो आई हैव टू मिस आउट ऑन सम कमेंट्स, सो सॉरी फॉर दैट। फोर्जा में कितने पे मिले भाई? बहुत भाई पटेल गौरंग ब्रो भाई, जितने भी FPS मिलेंगे भाई, देखो मैं एक पर्टिकुलर लिमिट नहीं बता सकता। 120 100 to 120 FPS या 130 FPS मिलना चाहिए आपको। 100 to 1 minute. 120 FPS you should get around with ACER NITRO 5 in Warzone, and 100p, 130 something, even 140 in some cases. तो भाई इतने FPS मिलना चाहिए आपको ACER Predator में Warzone के साथ एट 100p 1440p पे वही FPS 100 to 120 के FPS रहेंगे अराउंड। फोर्जा में भाई एट एक्सट्रीम सेटिंग में, क्योंकि VRAM एक्सीड कर जाता है 6GB से ज़्यादा VRAM यूज होने लगता है, तो इन दैट केस आई थिंक एट अल्ट्रा सेटिंग्स just below extreme settings you should be getting around 90 FPS, like in the ideal scenario. Let's kill a deer. I'm Solomon boy. MK Gaming भाई i5 कौन सा जनरेशन है और i7 कौन सा जनरेशन है भाई, बताओ ना भाई। डिस्कॉर्ड मीडिया चेक करो। ओ डिस्कॉर्ड मीडिया चेक करते हैं, ओके भाई डिस्कॉर्ड चेक करते हैं ना भाई विवेक भाई, लेकिन अभी तो मैं चेकआउट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बाद में बिल्कुल चेकआउट करते हैं। थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा भाई आपको। एंड गाइज आई विल बी मिसिंग आउट ऑन सम कमेंट, बिकॉज भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं गाइज, एंड होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो कि भाई इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आई माइट हैव टू मिस आउट ऑन सम ऑफ द कमेंट्स, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीड ऑल द कमेंट्स at once. And guys,
और लाइक आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग है. वी हैव ऑलरेडी गॉट ओवर 1K व्यूज ऑन आवर लाइव स्ट्रीम एंड लास्ट 1 hour आई हैव गॉट अराउंड 1.1K व्यूज ऑन माई लाइव स्ट्रीम. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइज. You like, as always, you guys are making my day. So thank you so much for everything, guys. Like, it really means a lot to me, and I'm still here. If you have any queries, just ask. Abhi, I will do my best to help you out with each and everything that I know, and if I don't know, I will definitely search it and will answer your queries. By best display laptop. भाई धवांचल ब्रो, भाई धवल पांचल ब्रो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम मिसप्रोनाउंस्ड योर नेम. तो भाई 70 से 80 के में भाई देखो, फिर OLED वाले लैपटॉप के लिए जाओ. अगर फोटो एडिटिंग के लैपटॉप चाहिए तो भाई उस केस में भाई 1 मिनट रुकना, मैं 1 मिनट सजेस्ट कर देता हूँ भाई. अब भी मानस भाई ने जैन बुक करके लाइक मैं वीवो बुक के बारे में सर्च कर लेता हूँ OLED वाला, और जो जैन बुक है उसके बारे में भी सर्च कर लेता हूँ. तो 1 मिनट का समय देना. आंसू जैन बुक. तो भाई अगर आपको 100% भाई वो चाहिए भाई, sRGB चाहिए, तो भाई आई थिंक जैन बुक इज़ अ गुड लैपटॉप भाई. अगर आपको भाई एक फोल्डेबल लैपटॉप चाहिए, और अगर आपका भाई बजट सिर्फ लाइक स्ट्रिक्टली अराउंड 80K है, तो लाइक जस्ट गिव मी अ मिनट. मैं भाई सर्च ही कर रहा हूँ अभी, लैपटॉप देख ही रहा हूँ. वीवो बुक भाई, वीवो बुक K15 OLED भाई. आप लाइक आई थिंक ये OLED आसूस के OLED वाले लैपटॉप से उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा आपको भाई, क्योंकि those are the only laptop that can offer you 100% sRGB at that price range, that is around 80K. I think this laptop will be perfect for you bro. अगर इसमें भाई ज़्यादा लाइक ज़्यादा SSD वाला मॉडल मिलता है, तो you can go for that as well. So this link is for, what is the name of my brother, धवल भाई के लिए लिंक है. धवल भाई, you can check this laptop out and hopefully you will just love this laptop. भाई ओम भाई 2 लाख के अंदर लैपटॉप लेना भाई, मेरा डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो. ओम भाई आपके लिए भी मैं लिंक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. चलो ठीक है, एक भाई के लिए और लिंक कॉपी पेस्ट कर देते हैं, देन वी विल फोकस ऑन द लाइव स्ट्रीम. तो ओम भाई के लिए जो मैं लैपटॉप सजेस्ट करूँगा भाई 2 लाख के अंदर, ठीक है, जो कि आपको बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस देगा भाई, वो लैपटॉप रहेगा ये. आपको भाई इस लैपटॉप में मज़ा आ जाएगा, स्पेशली फॉर द प्राइस दे आर आस्किंग फॉर. अगर 3070 Ti लेना हो तो भाई वो भी ले सकते हो. ये इवन 2 लाख से कम ही कॉस्ट करेगा, और इसमें भाई लाइक परफॉर्मेंस भी एक नंबर को देखने को मिलेगी. और मैं 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट सर्च ही कर देता हूँ. प्रेडेटर हीलियो 300 जो RTX 3070 Ti वाला मॉडल है. आई डोंट नो वेदर इट इज़ अवेलेबल राइट नाउ और नॉट. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओ माई. एंड गाइज सबके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, आई कैन अश्योर यू, बट यू माइट हैव टू वेट फॉर 2 or 3 minutes. भाई 3070 Ti वाला मॉडल आई थिंक इट इज़ नॉट अवेलेबल एज ऑफ दिस मोमेंट. तो भाई इस केस में आई थिंक जो मैंने आपको 3070 वाला मॉडल दिया है, वो मॉडल आप बाय करोगे तो यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी विद योर परचेज होम भाई, विदाउट एनी इशूज़. और भाई अब थोड़ा सा भाई, अब मैं लाइक फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, और भाई जो लेटेस्ट कमेंट्स में उनको रीड करना स्टार्ट करूँगा. तेज मेहता भाई किस प्राइस में पड़ रहा है, और भाई 1080p की डिस्प्ले है, कितने हर्ट्ज की डिस्प्ले है, वो और बताओ, एंड देन आई विल टेल यू कि भाई whether you should go for it or not. Otherwise भाई that it is one of the most perfect laptop that you can get for sure. अब भाई देखो, अभी मैंने वो कर दिया ना स्किप, तो भाई देखो मेरा GPU वोल्टेज नीचे आ गया था, इसलिए FPS नीचे आ गया हमारा. एंड नाउ आई थिंक वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. आई थिंक वी नीड टू क्विट दिस गेम, go to, okay, we just came outside, so sorry for that. I'm just give me a minute, I'm just restarting the game. Riot bro, please do play bit like either on the performance mode or on the turbo mode. I think you are playing on a silent mode, that's why it has 6001. And which model you are using, Riot bro, that it is giving you that kind of clock speed, because this is extremely low. Rizban bro, like a G15, the GeForce G15 is not a gaming laptop bro. Please make sure that you
know that it is not a gaming laptop. It is a thin and light laptop that can be used for gaming, for casual gaming, but for not for hardcore gaming. It is a laptop that is made for like mainly considering the productivity. So if you are buying a laptop for 1.2 lakhs, so what I'm gonna suggest is like if productivity is the main thing that you're looking for, then GeForce is the way to go. That those are one of the best laptops that you can buy. But if you're buying a gaming laptop, you shouldn't go for G15. That's my personal opinion. एलियन वेयर के अच्छे होते हैं क्या भाई? एलियन वेयर अच्छा है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस, बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस है भाई. लेकिन भाई एलियन वेयर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, स्पेशली इन इंडिया. इतना ज़्यादा ओवर प्राइस है, कोई मतलब नहीं है. उससे बेटर भाई बहुत अच्छे लैपटॉप है, इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं. भाई मानस भाई, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग. आकाश भाई, creators track by for all these things, just buy ACER NITRO 5, ACER Predator Helios 300, 12700H RTX 3070 or the 3070 Ti. The 3070 is gonna cost you 1,75,000, and I think it is one of the best laptops for 3D and like for everything. For under 200K, it is one of the best laptops that you can get. भाई हेलो भाई, एरिया में क्या अच्छे होते हैं क्योंकि भाई बहुत अच्छे होते हैं गेमिंग लैपटॉप भाई, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, कोई मतलब नहीं है. उससे बेटर ये सब प्रीडेटर हेलियोस ले लो या लीजन 5 लीजन डिवाइस ले लो भाई. G15 with Ryzen 9 Lucifer Z3 bro. I think are you talking about Asus Asterisk G15 or Asus GeForce G15 bro? And there any difference between performance mode and turbo mode? Like definitely there is a lot of difference between performance mode and turbo mode. In turbo mode you ain't gonna like neither your CPU nor your GPU gonna get the turbo boost. So like the 25 watt turbo boost. So if you are on turbo boost turbo mode, you're gonna get like the 25 watt turbo boost will get utilized. So that's one of the major difference. भाई एंजॉय लाइव भाई, सही बताऊं आप एसर प्रेडेटर ले लो 1.54 लाख वाला भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. बेस्ट लैपटॉप अंडर 1.5 लाख कि लाइक द लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो वाले लिंक जाकर चेक करो एंड भाई इट विल बी अ परफेक्ट लैपटॉप फॉर यू. लीजन मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ एंजॉय लाइव ब्रो, क्योंकि लीजन की आफ्टर सर्विसेज के बारे में भाई डिस्कॉर्ड पे बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव कंप्लेंट ऑन माई डिस्कॉर्ड चैनल, इसलिए मैं लीजन सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ. नहीं तो आप लीजन के लिए जा सकते हो, बट एसर प्रेडेटर क्योंकि एसर की सर्विसेज अच्छी हैं इन मोस्ट ऑफ द इंडिया, तो मैं एसर प्रेडेटर हेलियोस 300 सजेस्ट करूँगा विद 12700H एंड RTX 3060 एट 1.54 लाख. क्रिएटर ट्रैक ब्रो सेम लैपटॉप फॉर यूएस बंदे. भाई डैश मत करो भाई, डैश मत करो भाई, प्लीज भाई डैश बाय मत करना. डैश इज नॉट अ गेमिंग लैपटॉप, इट इज अ थिन एंड लाइट लैपटॉप. इफ यू वांट to use it for mainly for coding and you will be consuming more content on it and not you ain't gonna make like you ain't gonna game on it, then I will suggest you to go with dash. But if you are into gaming and if you want to buy a gaming laptop, don't go for it. It's much better to go with ACER NITRO 5 for 80K with 8GB RAM and then buy 8 more GB of RAM. That is a DDR4 RAM, and then your RAM will be upgraded to 16GB and then play game on it. You will be extremely happy with that. This is the answer for you H Techno bro. उसका बैटरी का इशू सुना है सर में. एंजॉय भाई देखो, एंजॉय भाई देखो, अगर आपको बेस्ट परफॉर्मिंग लैपटॉप चाहिए, आप इंटेल का कोई भी लैपटॉप उठा लो 12 जनरेशन वाला, सब में ही बैटरी लाइफ कम है. इवन भाई जो इस साल के एसर आ रहे हैं उनमें 90 वॉट और की बैटरी है, उसके बाद भी उनमें 2.5 या 3 घंटे का बैकअप मिलेगा, क्योंकि भाई 12 जनरेशन बहुत ज़्यादा पावर हंगरी है. अगर भाई बैटरी लाइफ बेटर चाहिए तो भाई फिर 6800H Asus TUF A15 के साथ जाओ, कोई इशू नहीं होगा भाई. जो मेरे पास है 1440p वाला मॉडल आपको मोस्ट प्रॉब्ली Asus एक्सक्लूसिव स्टोर में मिल जाएगा. अगर वो बाय नहीं करना है तो भाई फिर अराउंड 1,13,000 में A17 बाय कर लो भाई, वो भी अच्छा है. उसकी क्या डिस्प्ले भाई कलर एक्यूरेट नहीं है, तो उसमें थोड़ा आपको लगेगा कि भाई कलर एक्यूरेसी थोड़े बेटर होने चाहिए थे. भाई एच टेक्नो ब्रो मैंने आंसर कर दिया भाई. What is the price that you are getting that for Ascendra Kumar Asolo bro? The Asterisk G15. इशू सुना उसमें मैक्स है क्या, लाइक उसमें भाई एडवांस ऑप्टिमस है, तो भाई इट इज बेटर देन मैक्स. इसमें आपको सिस्टम को रिस्टार्ट भी नहीं करना पड़ेगा इफ़ यू आर लाइक स्विचिंग फ्रॉम डेडिकेटेड लाइक फ्रॉम आई GPU टू डेडिकेटेड GPU. 1440p स्वास्थ्यिक सरकार ब्रो. हेलो भावर भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन भाई. By Ryzen 9, like Asterisk Ryzen 9 and the GPU that you wanna get with that laptop, Lucifer Z3 bro.
90k. KS gaming. If you are at 90k, bro, my personal recommendation would be to go for ACER NITRO 5 i5 12500H and RTX 3060. That's gonna cost you around 80k. The link is in the description. You should buy 8 more GB of RAM and then upgrade it to 83, like around 83k. You will get a perfect laptop. If you want a laptop with a Mac switch, like if that is one of your priorities, I think going for like Asus TUF A15 12500H and RTX 3050 with 95 watt of RTX 3050 at around 86k, that is available on Flipkart, is one of the best deals that you can get for that price. Best performing RTX 3050 laptop, bro. They will be price over 1 lakh, but over 1 lakh you can easily get a RTX 3060 laptop. So it's not worth to get the best performing RTX 3050 laptop. Instead, you should go for either go for an average performing RTX 3050 laptop or an average performing RTX 3060 laptop, because the best performing RTX 3050 laptop costs like similar to RTX 30, like price is cost around same as RTX 3060 laptop, average performing RTX 3060 laptop. Manas bhai, you are on fire, bro. You have been helping me out so much, bhai. भाई HP का भाई ओमान सीरीज देखा भाई, सौरभ भाई मैंने लैपटॉप देखे, डेस्कटॉप सीरीज नहीं देखा भाई, उसको देखता हूँ भाई. Rizwan bro, it will be good. Like Asus G15 will be good enough for running design software without any issue. Asus A15 RTX 3060 always over RTX 3050, bro. Definitely, like 3060 is so much better. Najish bro, check the description, you will see the link. Thank you so much for helping me out again. Najish bro, I will just tell the name as well once again. For like the best laptops under 65k would be I think if you can get the Lenovo IdeaPad Gaming RTX 3050 85 watt and Ryzen 5 5600H. $5600H for around 75k, I think it is. Like, what was your price? Now for 65k, I think it is one of the best laptop that you can get for that price. Solo bro, for 145 lakh, I think it is quite similar. It will be performing quite similar to the TUF A15 that I have. You can definitely go for it. You won't have any issues with it. But it will have all the RGB in the world to make you happy as well. So you can definitely go for it. There aren't any issues with this laptop. That laptop. The only check, you will get better battery life as well if you compare it with 12th generation laptop. Bro, स्वास्तिक सरकार भाई किसके लिए चाहिए? गेमिंग के लिए चाहिए, प्रोडक्टिविटी के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए? पर मैं सजेस्ट करता हूँ भाई. Yagnik bro, the best performing RTX 3050 laptop would be i7 12700H RTX 3050 laptop from ACER Asus TUF A15. हम क्या भाई RDR2 भवर भाई, हम खेल रहे हैं Red Dead Redemption 2. How is Asus G15 running? It's a great laptop, bro. Like, what is the CPU that you are going for? Just tell me that as well, RM bhai. And guys, I will just request you one thing. Guys, अगर आप लोगों ने अभी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन नहीं किया भाई, प्लीज मेक श्योर आप वो लाइक बटन को दबा रहे हो. आई थिंक I will just let me see how many likes we are on as of this moment. So we are at 102 likes. So guys, आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करोगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये लाइव स्ट्रीम पहुंच पाएगी. सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन टू हेल्प मी आउट. उसके बाद इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल भाई, मेरा कंटेंट को देखो, उसका अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल. अगर मेरा कंटेंट देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो. कौशिक भाई 85 के भाई गेमिंग के लिए ले रहे हो स्वास्तिक भाई, तो भाई मैं बोलूँगा 4000 बजट और बढ़ाओ स्वास्तिक भाई. 1,54,000 में एसर प्रेडेटर हीलियोस 300, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. फर्स्ट लिंक है इन लैपटॉप ओवर 125k, उसको बाय कर लो. यू विल बी रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस. 80 से 85 में भाई एसर नाइट्रो 5 ले सकते हो कौशिक भाई. 80,000 का पड़ेगा 8GB रैम के साथ, i5 12500H के साथ. बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा. अगर उसमें आप एक 3000 रुपए की एक 8GB की स्टिक और लगा लूँगा रैम के, एंड देन दैट लैपटॉप विल परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल.
अंडर 50K भाई, अंडर 50K का भाई मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट भाई आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो एंड देख सकते हो या उनमें से कोई भी लैपटॉप अगर 50K के अंडर अवेलेबल हो तो यू कैन गो फॉर देम। क्योंकि मैंने 50K के अंदर भाई जब सीरियसली बताऊँ ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, मैंने 50K के अंदर इतनी रिसर्च नहीं की, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कुट्टू ब्रो कि मैं आपको आपके हेल्प आउट नहीं कर पा रहा हूँ भाई। नो इशूज रिजवान ब्रो, इट्स माई प्लेजर दैट आई वॉज एबल टू हेल्प यू आउट एंड भाई थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग ऑल द क्वेश्चन। कौशिक भाई आपका क्या क्वेश्चन था भाई, प्लीज़ यार भाई मैंने मिस कर दिया, मैंने बता दिया भाई। कौशिक भाई एसर नाइट्रो 5 देखो, आप जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन में, उसमें लिखे हुए हैं लैपटॉप बेस्ट लैपटॉप अंडर 80K, उसमें एक लैपटॉप लिखा हुआ एसर नाइट्रो 5 सबसे ऊपर, जिसमें i5 12500H और RTX 3050 मिल जाएगा 95 वॉट वाला। वो लैपटॉप आप ले लो, उसमें 8GB रैम है, उसके बाद फिर 8GB रैम उसमें और लगा लेना, उसमें हो जाएगी 16GB रैम DDR4 वाली 3000 में पड़ेगी, फिर आप वो लैपटॉप को यूज़ करना एंड यू विल बी रियली हैप्पी भाई। नहीं नहीं 140 वॉट का है साथ शॉस्टिक भाई, 140 वॉट का है, 115 वॉट का नहीं, 140 वॉट का है। लीजन 5i Pro 2022 जो भाई अभी अभी अवेलेबल हुआ है 1,64,000 का, आई थिंक फ्रॉम मैंने जो सुना है कुछ कूपन लगा के 1,57,000 में पड़ जाता है भाई। प्राइस कितना भाई मैक्सिमम प्राइस तक जा सकते हो आप ऋतिक भाई, ऋतिक लकाड़े भाई। प्रांजल भाई अभी दिखा देते हैं सेटिंग्स भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 मिनट का टाइम देना, अभी दिखा देंगे लाइव स्ट्रीम के एंड होने के बाद। भाई Asus TUF A15 RTX 3060 और भाई G70 भाई TUF A15 RTX 3060 इज बेटर, मच 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 बेटर देन G15 विदाउट लाइक एनी डे ऑफ द वीक फॉर कंटेंट क्रिएटर ना 75K के लो भाई। अगर सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करना है हेल्प भाई और 75 किलो के नीचे चाहिए, 75K के नीचे चाहिए, तो भाई आप Asus TUF A15 के साथ जा सकते हो। इवन तो डिस्प्ले कलर एक्यूरेट नहीं है, जो GPU है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, लाइक CPU और GPU दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। 75K में 16GB रैम के साथ आपको Asus TUF A15 मिल जाएगा 2021 वाला 4800H और RTX 3050 वाला, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा वो लैपटॉप की परफॉर्मेंस भाई। टेक शायर ब्रो मैं भाई एडवांटेज एडिशन इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि भाई कुछ लोगों से जिनसे मेरी बात हुई है जिनके पास एडवांटेज एडिशन था, तो दे टोल्ड मी कि भाई ठीक है भाई बहुत अच्छा लैपटॉप है, 12GB रैम है, सब कुछ है, वो लैपटॉप बहुत ज़्यादा ही CPU सेंसिटिव है, लाइक सॉरी CPU सेंसिटिव नॉट CPU सॉफ्टवेयर सेंसिटिव है। तो अगर कोई चीज़ आप अपग्रेड करना भूल जाते हो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो जाएगी। तो आपको उस लैपटॉप के साथ हमेशा एक इशू लग रहेगा कि अरे भाई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा यार भाई, मैं ये भूल गया वो भूल गया, तो वो हेडेक है, इसलिए मैं एडवांटेज एडिशन रिकमेंड नहीं करता। अगर आप वो हेडेक सहन कर सकते हो तो भाई एडवांटेज एडिशन को बाय कर लो भाई। जयदीप भाई चौहान भाई HP पवेलियन अच्छा लैपटॉप है, आप रेंज बताओ किस लैपटॉप में खरीदना है लैपटॉप। 200K के क्रिएटर्स ट्रैक्स भाई मैंने आपको सर आपको बताया, या भाई जो भी हैं आपको बताया मैंने, एसर प्रेडेटर हीलियोस 300 डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, उसमें लिंक डली हुई है सर। सेकंड लिंक है RTX 3070 वाली 150 वॉट वाला RTX 3070 आता है, वो लैपटॉप बाय करो, यू विल बी रियली हैप्पी। Alison Chetri bro, I think you are talking about the GTX 650 model and I think it is a good model for 55K. And guys, I have to miss out some chats mainly because भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं भाई। तो भाई 1.3 के में गुरमीत भाई भाई देखो आप लीजन 5 ले सकते हो 5800H और RTX 3060 वाला, अगर आपको बहुत अच्छे थर्मल चाहिए तो, लेकिन उसका आफ्टर सेल सर्विसेज का पता कर लेना कि कैसे हैं आपके एरिया में आपके स्टेट में, अगर अच्छे हैं तो लीजन 5 ले सकते हो, थर्मल्स बेटर हैं उसके। अगर आपको बेस्ट परफॉर्मिंग लैपटॉप चाहिए और आपको भाई लाइक आपके यहाँ पे भाई अगर लीजन की अच्छी सर्विस नहीं है तो भाई आप टफ A15 ले लो, A17 ले लो जो 1,13,000 में पड़ रहा है, 14,000 में पड़ रहा है गुरमीत भाई। उसकी डिस्प्ले कलर एक्यूरेट नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा लैपटॉप है। अगर आप आपका प्राइस एक्सटेंड कर सकते हो 1.4 लाख तक तो भाई 1440p वाला एडिशन भी ले सकते हो भाई। अथर्व काले ब्रो 100K के नीचे बेस्ट लैपटॉप है Asus TUF A15 जो 5900HX और RTX 3060 के साथ आता है। रुतबिक लकाड़े ब्रो 90,000 के अंदर बेस्ट लैपटॉप है भाई, 80,000 का भाई ACER NITRO 5 i5 12500H लो और RTX 3050 वाला लैपटॉप लो, 3000 की रैम लगाना 83K में, वो लैपटॉप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आपके लिए। 6 जैन के कौन सा लैपटॉप है भाई i7 6 जन भाई 6 साल पहले रिलीज हुआ था भाई, 12 जनरेशन की बात कर रहे होंगे ऋषि यादव भाई आप। भाई देखो असेलो ब्रो सीरियसली बताऊं भाई कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप थंडरबोल्ट का भाई मेन यूज क्या रहता है कि जब आप भाई डिस्प्ले आउटपुट लेना चाहते हो स्पेशली एट 4K तो आपको थंडरबोल्ट थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, या फिर आप भाई बहुत ज़्यादा स्पीड वाले कुछ भाई डाटा ट्रांसफर करना है बहुत स्पीड से, या आपको एक्सटर्नल GPU यूज़ करना है तो भाई थंडरबोल्ट डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट। बाकी भाई परफॉर्मेंस वगैरह कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी लैपटॉप ले लो थंडरबोल्ट के बारे में मत सोचो, मेरा लाइक ये मानना है क्योंकि इवन तो मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ लाइक लीजन
भाई लीजन के लाइक सॉरी राइजन वाले लैपटॉप में मुझे कोई इशू नहीं हुआ, मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे थंडरबोल्ट चाहिए। सर भाई आप गुरमीत भाई अगर आप टायर 1 सिटी से हो, ठीक है, टायर 1 सिटी या फिर आप मेट्रो सिटी से हो भाई, तो MSI का ले लो, GP66 सब बेस्ट लैपटॉप, परफॉर्मिंग लैपटॉप। बस सर्विस अच्छी नहीं है भाई मेट्रो सिटी के बाहर, फिर दिक्कत हो सकती है आपको। भाई 32 GB रैम रियली नीड में नहीं है, लेकिन अगर भाई आपको लैपटॉप में 16 GB सिंगल चैनल पहले से मिल रहा है तो फिर तो 32 GB अपग्रेड करने में फायदा है। 8 GB की लोगे तो 16 GB की हटानी पड़ेगी, उससे बेटर एक 16 GB की लगी है, एक 16 GB की और लगा लो, फ्यूचर प्रूफ हो जाएगी, क्या दिक्कत की बात है। रुद्र डैंग ब्रो 5900 HX A15 जो 1 लाख के अंडर आ रहा है, इट्स गुड इनफ लैपटॉप, यू कैन डेफिनेटली बाय विदाउट एनी इशू। भाई एसर नाइट्रो 5 कौन सा वाला और A15 कौन सा वाला, भाई थोड़ा रेंज बताओ भाई, फिर मैं आपको हेल्प आउट करता हूँ भाई। MSI के भाई बेस्ट थर्मल्स हैं भाई विदाउट एनी इश्यूज, MSI है बेटर थर्मल देन इवन लीजन 5। बस ये है कि MSI की सर्विस उतनी अच्छी नहीं है, इवन लीजन की लेनोवो की सर्विसेज बेटर है इंडिया में देन MSI। गुड नाइट जोगल भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर मैन, एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग ऑल द क्वेश्चन। माल ब्रो भाई बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है भाई। इन माई डिस्कॉर्ड सर्वर देयर आर मेनी पीपल हु हैव टेम्परेचर्स ऑफ अराउंड 80 to 85 डिग्रीज इवन ऑन लीजन, तो भाई टोटली डिपेंड्स ऑन योर रूम टेम्परेचर एज वेल। हाँ आकाश उदासी ब्रो, जो लैपटॉप मेरे पास उसमें 1440p की डिस्प्ले, DCI PC 100%, तो ये लैपटॉप मुझे 1,43,000 में पड़ा था आसूस एक्सक्लूसिव स्टोर से। एस्पायर 5 भाई GTX 1650 वाला लेना है, क्योंकि जो RTX 2050 वाला है वो तो अच्छा ही परफॉर्म नहीं कर रहा है, बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है। सुतारू गोजू ब्रो भाई कॉन्फ़िगरेशन ही बताइए आप, मैं फिर सजेस्ट कर पाऊंगा। 95K के अंडर बेस्ट गेमिंग लैपटॉप रहेगा भाई जो एसर नाइट्रो 5 आ रहा है 5600H और RTX 3060 वाला। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी भाई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उस लैपटॉप में भाई। RTX 3060 और 3070 है भाई, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस का डिफरेंस है, स्पेशली जब VRAM का यूसेज 6GB के ऊपर जाता है। तो अगर आप नॉर्मली देखोगे तो भाई 10 से 12 FPS का डिफरेंस रहेगा ऑन एन एवरेज इन एवरी गेम। आसूस की सर्विसेज कैसी भाई? सनात स्वानी ब्रो भाई, जितना मुझे पता है, जितना मैंने रिसर्च किया हुआ है, आसूस है लाइक ऑल ओवर द इंडिया, आसूस है वन ऑफ द बेटर सर्विसेज इन द मार्केट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई थिंक after Dell and HP, Asus have the best after sales services in India। 5 और डियर का शिकार कर लेंगे भाई आज। मनार जादन ब्रो भाई, लीजन 5i से M16 बिल्कुल बेटर है भाई, लेकिन ये याद रखना लीजन 5i प्रो गेमिंग लैपटॉप और M16 प्रोडक्टिविटी लैपटॉप है, तो वो बात हमेशा याद रखा करो कोई भी लैपटॉप चूज करने से पहले कि आप एक गेमिंग लैपटॉप बाय करने गए थे या फिर आप एक प्रोडक्टिविटी वाला लैपटॉप ले रहे हो। अगर आप एक प्रोडक्टिविटी वाला लैपटॉप ले रहे हो तो M16 बेटर है, अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो लीजन 5i बेटर है। हॉर्स को नहीं मानना भाई। 2050 वाला मत लेना पे ज्यादा ब्रो, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इवन GTX 1650 से भाई से भी खराब है। माल अब स्क्रूम गेमर ब्रो देखो भाई, इवन आपके पास लीजन है जिसके थर्मल बहुत ज़्यादा मैनेज मतलब अंडर कंट्रोल है, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप भाई लाइक ओवर क्लॉकिंग करो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका इशू हुआ है लैपटॉप में, और भाई कुछ समय बाद अगर आप उसको ओवर क्लॉक करते हो तो आपके टेम्परेचर हाई जाएंगे और फिर आपका थर्मल पेस्ट जल्दी से ख़राब हो जाएगा, फिर उस इशू में आपको उस केस में आपको थर्मल पेस्ट जल्दी से चेंज कराना पड़ेगा। तो भाई मेरे हिसाब से ओवर क्लॉकिंग वर्थ इट नहीं है जितने इशूज़ होते हैं, अगर आप कंपेयर करूँगा कि जितनी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलेगी उस हिसाब से। डैश मत खरीदना जाफर ब्रो, डेल इज अ थिन एंड लाइट लैपटॉप, इट इज़ नॉट अ गेमिंग लैपटॉप। अगर आप एक थिन एंड लाइट लैपटॉप लेना चाहते हो डैश के साथ जाओ, इफ यू आर बाइंग अ गेमिंग लैपटॉप डोंट गो विद द डैश। भाई HP विक्टर्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही खराब है भाई ऋत्विक भाई, तो भाई HP विक्टर्स के बारे में तो भाई मैं बोलूँगा भी नहीं, इवन भाई मैंने 1-2 सजेशन दे दिए हैं, क्योंकि भाई उस प्राइस रेंज में वो अच्छी डील दे रहा है, लेकिन भाई बहुत बहुत भाई दिक्कत वाली बात है भाई, उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही खराब है, इवन इट इज़ नाइट्रो 5 से बेटर है। अर्पित जेड ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन भाई, आपका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है हमारी लाइव स्ट्रीम पर।
भाई रोशन भाई, आप प्रोडक्टिविटी लैपटॉप ले रहे हो लाइक 360 डिग्री वाले जो लैपटॉप ले रहे हो जो पूरे बंद हो जाते हैं, पीछे साइड पूरे हो जाते हैं? आई थिंक योगा, क्योंकि एक और टैबलेट जो मुझे पता है योगा लैपटॉप में वो वैसे ही रहते हैं, लैपटॉप रहते हैं जो लाइक 2-in-1 लैपटॉप। ये कौन सा जानवर है भाई? गया भाई। ये सब प्रोडक्ट भाई i7 11 जेन मतलब मत लो माइकी ब्रो, अगर आपको भाई कलर एक्यूरेट डिस्प्ले नहीं चाहिए तो, अगर आपको कलर एक्यूरेट डिस्प्ले चाहिए तो i7 11 जनरेशन ले लो, नहीं तो भाई क्योंकि जिस प्राइस रेंज है वो आ रहा है 1 लाख के अराउंड, आई थिंक इधर Asus TUF A15 माइट गिव यू स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस, लाइक आई थिंक 1,12,000 में आ रहा है, तो Asus TUF A17 जो 6800H और RTX 3060 वाला है वो आपको डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस देगा भाई। CA group, yeah भाई definitely go for the Gurpreet Singh भाई, definitely go for the stream a gaming laptop, because if you are not going for a gaming laptop you at least need 4 GB of like at least RTX 30 series 3000 series GPU to do good quality live stream। भाई मैं मॉडल नंबर से सीधा नहीं बता सकता हूँ अब्दुल अराब ब्रो भाई, आई एम सो सॉरी भाई, क्योंकि मॉडल नंबर से मुझे ही नहीं पता, इतने याद नहीं रहते हैं मॉडल नंबर भाई। Flex X Originals bro, thank you so much for joining in man, how are you brother? भाई सौरभ भाई थोड़ा पता कर लेना उसमें इंटरनेशनल वारंटी है कि नहीं, अगर इंटरनेशनल वारंटी नहीं है तो शायद मैं सजेस्ट ना करूं, क्योंकि इशू तो भाई डेस्कटॉप में भी हो सकते हैं और फिर उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है कि फिर यूएस अगर शिप करना पड़ा सर्विस के लिए तो फिर पसीने छूट जाएंगे भाई। रोग एस्ट्रिक 1650 भाई किस प्राइस में पड़ रहा है, कौन सा सीपीयू मिल रहा है भाई? i7 12 जनरेशन विद RTX 3080 सही रहेगा भाई? 3080 और 3060 को कैसे कंपेयर कर रहे हो? 3060 और 3060 को कंपेयर कर रहे हो? i9 आप भाई ए सब प्रेडेटर की बात कर रहे हो मनास ब्रो, तो मैं तो वो सजेस्ट करूंगा ही नहीं आपको। 3080 नहीं बोल रहे होंगे भाई, 3060 बोल रहे होंगे। i7 12 जनरेशन इज बेटर अगर 3060 है दोनों में तो। RGB लाइट भाई, केएस गेमिंग तो फिर भाई एस्ट्रिक्स उठा लो भाई, RGB लाइट चाहिए तो भाई एस्ट्रिक्स का जो लैपटॉप आ रहा है आई थिंक उसमें भी भाई आई थिंक 12500 6600H के साथ भी आ रहा है शायद, तो एस्ट्रिक्स का कोई भी जो एस्ट्रिक्स G15 है उसमें से कोई भी लैपटॉप उठा लो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वाला। मिनिमम इतना याद रखना है कि RTX 3050 मिल जाए 90K के अराउंड, 95 वॉट वाला, और उसमें 6000 सीरीज रही तो और अच्छी बात है, या फिर इंटेल 12 जनरेशन रही तो और अच्छी बात है, क्योंकि उसमें मक्स मिलेगा और फुल वॉट का RTX 3050 मिलेगा 95 वॉट का, वो लैपटॉप ले सकते हो। सुजीत भाई कौन सा लैपटॉप है, कौन सा प्रोसेसर है बताओ भाई? भाई रुतबे लखाड़े ब्रो भाई देखो, इंटेल के साथ भी आ सकते हो, राइजन के साथ भी आ सकते हो, कुछ इंटेल के अच्छे हैं कुछ राइजन के अच्छे हैं, बट टोटली डिपेंड्स कि आपकी भाई नीड क्या है उस हिसाब से भाई। भाई वैलोरेंट में GTA 5 में कितना FPS आता है भाई? कौन सा, जो A15 मैं यूज़ कर रहा हूँ या F15 भाई? क्योंकि आपने सिर्फ 15 लिखा है भाई। G15 मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, डेल G15 प्रियांशु त्यागी ब्रो। मेन रीज़न इज क्योंकि जो डेल G15 था उसके थर्मल्स लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ही ख़राब थे, इवन इस ईयर उन लोगों ने भाई आई डोंट नो कितना इंप्रूवमेंट किया है, जितना मुझे सुनने में आया इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं किया है। नीतीश मानस ब्रो भाई, अगर आप एक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप ले रहे हो तो भाई जेनबुक इज अ गुड इनफ लैपटॉप, स्पेशली विद OLED स्क्रीन यू विल बी रियली हैप्पी विद द कलर एक्यूरेसी। कंटेंट कंजम्पशन के लिए और कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत अच्छे लैपटॉप है, बट मेक श्योर कि उनमें भी भाई अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो GPU अच्छा रहे। लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप XEX एट 9090 के भाई, सिर्फ XEX एट 9090 के जो आप बोल रहे हो, बस इतना है कि उसका जो भाई प्राइस है, लाइक उसका जो टेम्परेचर है CPU का, दे गो अ बिट हायर। एंड गाइस लिटरली लाइक I have been answering so many questions guys, I'm so sorry that I have to miss out on some questions। आकाश उदासी भाई, अभी मैं लाइक भाई I was getting around 100 FPS, like 980 to 100 FPS on 1440p in Bordeaux। There is some DDR5 issues with Bordeaux, especially for this laptop, I don't know what is the issues भाई। हाँ टफ सुजीत भाई, टफ A17 सेम एस योर। सुजीत भाई आपने इससे पीछे कुछ पूछा था, ओके भाई देखो सुजीत भाई, इफ दैट द केस तो भाई आप CPU इंटेंसिव गेम खेल रहे होंगे, इसीलिए अगर आप GPU इंटेंसिव गेम करोगे तो अपने आप जैसा मेरा चल रहा है ना वैसे ही टेम्परेचर आ जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको टेंशन है तो एक काम करो भाई, आप जाओ भाई, एक मेरी वीडियो पढ़ी हाउ टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ योर राइजन लैपटॉप, टर्बो बूस्ट ऑफ कर दो, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी परफॉर्मेंस, बट यू विल बी हैप्पी विद द टेम्परेचर। कैसे गेमिंग भाई 8GB रैम मिल रही है तो उसमें भाई 8GB रैम और लगानी पड़ेगी, याद रखना भाई। लाइक 4800H मिल रहा है भाई, और कोई मॉडल नहीं मिल रहा है कि भाई एस्ट्रिक्स का भाई 88 87 88 के में भाई,
केयर गेमिंग ब्रो, क्योंकि भाई मैंने उतना रिसर्च नहीं किया भाई, मैंने बेस्ट लैपटॉप जो उस प्राइस रेंज में मिलते हैं मैंने वो बता दिया। अब आपको RGB का तड़का चाहिए तो उस वजह से मैं कुछ दूसरा सजेस्ट कर रहा हूँ भाई। मनाज भाई देखो गेमिंग ठीक ठाक करा देगा, बट अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो टफ A15 से और उसको कंपेयर करो रीजन 5 से, तो उनसे तो भाई थोड़ा कम ही कर पाएगा ना, क्योंकि उसमें भाई 100 W का RTX 3050 है। भाई मत जाओ 2050 के लिए, मत जाओ एस्पायर में, एस्पायर में 1650 कर लो भाई, क्योंकि 2050 वाला बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है भाई। आर्यमान भाई पर्सनली मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई आप फ्लिपकार्ट ले लो, फ्लिपकार्ट से बाय करो। आई एम सो सॉरी कि भाई मैंने इतनी देर बाद रिप्लाई किया, क्योंकि फ्लिपकार्ट में भाई, क्योंकि जितना मैंने सुना हुआ, जितनी मैंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं भाई, देखो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। मेरा अमेजोन के साथ बिल्कुल परफेक्ट एक्सपीरियंस रहा है। मैंने एक लैपटॉप बाय किया, मैंने फ़ोन बाय किया एंड आई डिडंट हैड एनी इशूज़ विद दैम। फ्लिपकार्ट में मैंने सुना है कि जो रिटर्न वाला इशू है वो थोड़ा सा इशू है फ्लिपकार्ट के साथ, तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि भाई अगर आप फ्लिपकार्ट से ले रहे हो तो यू नो ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, अदरवाइज परचेज फ्रॉम अमेजोन, इट इज मच बेटर एंड मच सेफर फ्रॉम हियर। भाई RTX 3070 टेक शायर ब्रो, फिर GP 66 ही है जो मैं सजेस्ट करूंगा, फिर RTX 3070 अंडर 1.5 लाख भाई। लेकिन उसके लिए आप या तो भाई मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो तो लो MSI का GP 66। ओ भाई क्या कर दिया मैंने, ठीक है पहली बात तो ये। और अगर आप भाई मेट्रो सिटी में नहीं हो तो फिर आप टायर 1 सिटीज़ में हो इंडिया की, अगर उसमें भी नहीं हो तो फिर मैं MSI लैपटॉप सजेस्ट ही नहीं करूँगा भाई, नहीं लेना भाई अर्पित भाई, क्योंकि परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा भाई, मैंने वीडियोस देख रखी हैं 1650 से कम परफॉर्म कर रहा है उससे। भाई देखो अगर आपको गेमिंग के लिए लेना है तो फिर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आपको ऐसे परफॉर्मेंस के लिए लेना है तो भाई ले लो भाई। भाई i5 12500H भाई, और आगे बताओ, क्योंकि i5 भाई 11 जनरेशन है, 12 जनरेशन दोनों है भाई, तो मैं कैसे समझूँ भाई। क्या हम BGMI को मोबाइल से लैपटॉप में बिल्कुल कर सकते हैं भाई उसके लिए, लेकिन आपको एलगाटो लेना पड़ेगा भाई, तो वो 16,000 का पड़ेगा एंड देन यू विल बी एबल टू स्ट्रीम। डायरेक्टली तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई उसमें क्या होता है कि एक इशू आता है कि भाई मतलब लेटेंसी इशू आएगा कि आप मोबाइल में खेल रहे हो उसके 2 या 3 सेकंड बाद आपके लैपटॉप स्क्रीन पे आ पाएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट आई फॉरगॉट इट, आई एम 50 मिनट्स ऑलरेडी लेट। आई एम ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी रिमेंबर दैट। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच वन ऑफ यू। एंड भाई मुझे बहुत बहुत गर्व है कि भाई मैं एक ऐसे देश का हिस्सा हूँ जिसके आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, एंड आज हम लोग एक स्वतंत्र देश में बैठे हुए हैं और आज हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी सिटिंग हियर एंड आई कैन जस्ट से लाइक, मैं भाई इवन धन्यवाद भी नहीं कर सकता हूँ जिन लोगों ने भी हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं जो कुर्बानियाँ दे रही हैं हम लोगों के लिए। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि भाई उन्होंने मुझे इतनी स्पेशल कंट्री में जन्म दिया, एंड होपफुली भाई जैसे इतने लोग देश के काम आ रहे हैं भाई, मैं भी देश के काम आऊँगा एंड आई विल बी एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ आवर कंट्री आउट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। स्ट्रीमिंग के लिए वीडियो कैप्चर कौन सा लें भाई? स्ट्रीमिंग के लिए भाई एलगाटो बाय करो भाई, वही बेस्ट है भाई। एलगाटो जो आता है दैट इज़ बेस्ट। 16K कुछ में पड़ेगा, S+ HD 60S+ कुछ करके है भाई। मैं फ्यूचर प्रूफ भाई G7 कॉन्फ़िगरेशन बताओ ना भाई सनत भाई, मैं कैसे बता दूँ फ्यूचर प्रूफ है या नहीं भाई। इट्स गुड इनफ भाई, किस प्राइस में मिल रहा है श्रेयांश भाई, थोड़ा आप ये बताओगे उसके बाद मैं बताऊंगा आप दूसरा लैपटॉप कौन सा ले सकते हो उसी प्राइस में। हीटिंग इशू भाई, मेंबर भाई सीरियसली भाई, प्रोसेसर कौन सा है भाई? देखो थोड़ा तो भाई, सॉरी गाइस, लाइटिंग का इशू हो गया था तो भाई थोड़ा तो भाई टेम्परेचर ज़्यादा जाएंगे भाई, थोड़े तो इशू जाएंगे टेम्परेचर के साथ, टप के साथ, लेकिन भाई वो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि भाई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर आपको भाई टेम्परेचर सही में अच्छी चाहिए तो भाई टर्बो बूस्ट डिसेबल कर लो भाई आप। MSI ब्रावो 15 ले लो भाई, ब्रावो मत लेना भाई प्लीज़, MSI का सिर्फ लेना है GP 66 या GP या G सीरीज़ लेना, उसके सिवा कोई सीरीज़ मत लो भाई, क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। Valorant GT5 में कितने FPS आ रहा है टफ भाई? जो मेरा वाला लैपटॉप है भाई, तो Valorant में अराउंड 300 FPS, इवन 320 FPS, 250 से 300 FPS के बीच में आता है एट 1440p। अगर वही बात आप करो GT5 में तो भाई 120 130 भी पहुंच जाता है कई बार एट 1080p, और भाई अगर मैं 1440p पे बात करूंगा तो 110 FPS मिल जाता है भाई। स्वास्थ्य सरकार भाई 12 विल बी बेटर। Ryzen 7 भाई, Ryzen 7 RTX 3060 विथ
भाई देखो 12 जनरेशन वाला तो बेटर रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है आप कौन से लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हो भाई। 1 लाख श्रेयाज दौंदकर ब्रो, मैं भाई रीड ही नहीं कर पाया भाई। अच्छा 1,05,000 में पड़ रहा है भाई। 1,05,000 में आई थिंक इट इज गुड इनफ डील। अगर भाई अगर आप सिर्फ 8,000 और खर्च कर दोगे ना तो आपको टफ A15 मिल जाएगा 2022 वाला, जिसमें RTX 3060 140 वाट वाला है, जो कि भाई आपको 2 साल ज़्यादा गेमिंग करा देगा आपके RTX 3050 से। तो भाई मेरे हिसाब से आप 10,000 और खर्च करो, एक 8 या 9,000 और खर्च करो, 1,14,000 में टफ A17 ले लो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, जिससे कि आप चेकआउट कर पाओ। उन्हें आप सर्च भी कर सकते हो, 1,14,000 में मिल जाएगा वो लैपटॉप। भाई देखो फिर 1.5 के में भाई फिर RTX 3060 3070 के लिए कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा भाई। 1.54 लाख में टेक शायर भाई एसर प्रेडेटर हेलियोस 300 है लैपटॉप 1.54 लाख में, जिसमें i7 12700H आता है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। वो लैपटॉप बाय करो एंड यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। भाई लिनोवो वाला लीजन बिल्कुल सही है, RTX 3060 वाला, मैं खुद लीजन का बहुत बड़ा फैन हूँ। बट इतना सा इशू है कि लीजन के जो थर्मल्स हैं, लाइक लीजन के जो आफ्टर सेल सर्विसेज है, वो इंडिया में भाई डिफरेंट पार्ट में जो मेरे डिस्कॉर्ड पे चैनल मेंबर्स उनको इशू हो रहा है। तो भाई उसके बारे में थोड़ा आप रिसर्च कर लेना, आपके एरिया में लिनोवो सही से सर्विस दे रही है कि नहीं। अगर दे रही हो तो भाई फिर आप बिल्कुल करा लो, ले लो भाई लैपटॉप, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 70K में ले रहे हो तो भाई फिर A17 ही एक लैपटॉप है जो 70K में बेस्ट लैपटॉप बेस्ट परफॉर्मेंस देगा आपको। अत्येंद्र ब्रो भाई G56 वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स एट 120K भाई। बस इतना याद रखना कि आफ्टर सेल सर्विसेज आप या तो मेट्रो सिटी से हो या टायर 1 सिटी से हो। अगर आप दोनों जगह से नहीं हो तो मत करना बाय MSI लैपटॉप को, नहीं तो फिर आफ्टर सेल सर्विसेज में बहुत इशू होगा भाई। नॉट गुड इनफ भाई, मैं ब्रावो तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा भाई। MSI के ब्रावो कुछ काम का ही नहीं। पहले तो आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है MSI की, फिर आप ब्रावो ले रहे हो जिसकी परफॉर्मेंस ही इतनी अच्छी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो आई वोंट सजेस्ट इट। GF63 थिन की भी भाई वही केस है, नाइदर द बिल्ड क्वालिटी नॉर द आफ्टर सेल सर्विसेज आर गुड फॉर MSI। भाई देखो 6800H के साथ आप RTX 3060 ले रहे हो ना, जो मेरा लैपटॉप भाई, इट विल बी मोर देन एनफ फॉर एनीथिंग भाई। देखो उसके बाद इफ यू वांट लाइक और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए मुझे भाई CPU की, तो भाई फिर i7 12 जनरेशन ले लो, नहीं तो 6800H भाई कोई छोटा मोटा प्रोसेसर नहीं है। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा भाई, इट इज टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर फ्रॉम Ryzen एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर दैट यू कैन बाय एज ऑफ दिस मोमेंट एज वेल। 5900HX ले रहा हूँ साइल एक्शन, और भाई 30 अच्छा PC बनवा रहे हो साइल एक्शन गेमिंग ब्रो। अब भाई i5 क्या आएंगे भी तो बताओ भाई। बाईटी गेमिंग, बाईटी बाबा गेमिंग भाई, i5 12500H, i5 11400H कौन सा है भाई वो भी तो बताओ। भाई पीस भाई लीजन 4600H और 1650 भाई गुड इनफ लैपटॉप। What is the price that you are getting it for? Around, I think it should be around 60K. If you are getting it for that, you will be really happy. GeForce G14 by it is like always remember RPG bro, it is not a gaming laptop, it is a productivity and light laptop। 73K पे I think GeForce G14 beta 1650 is a great deal। 60K के अंडर भाई बेस्ट लैपटॉप चिराग भाई, मेरा डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो आप, मेरे डिस्क्रिप्शन में 60K के अंडर बेस्ट लैपटॉप है भाई। HP पवेलियन ले सकते हो आप, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप दैट यू कैन बाय एट दैट प्राइस। उसमें बिल्ड क्वालिटी भी उसकी अच्छी है, तो भाई आप वो भी बाय कर सकते हो। या फिर आप ACER NITRO 5 के साथ भी जाओगे तो यू वॉन्ट मेक अ रॉन्ग चॉइस, इट इज अ रियली गुड लैपटॉप एज वेल। I think I might recommend you to go with ACER NITRO 5 a bit more than the HP pavilion। Funny by same recommendation to you as well। Go with ACER NITRO 5 11400H and RTX GTX 1650 भाई। ऋत्विक लखाड़े ब्रो भाई, ओके आप लोगों का चल रहा है कन्वर्सेशन भाई बहुत कुछ। अर्नब भाई HP Vectex Ryzen 5 5600H with भाई भाई 5500 5500 में सजेस्ट नहीं करूँगा। इट बेटर टू गो विथ इंटेल सॉरी NVIDIA CPU GPU सॉरी इफ़ यू आर मच मोर इनटू गेमिंग भाई। 16GB रैम, बट ये याद रखना डुअल चैनल में, सिंगल चैनल 16GB रैम और 8GB रैम में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतना कुछ भाई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है भाई, क्योंकि जो GPU है वो 134-35 वाट पे चल रहा है, इसलिए CPU टर्बो बूस्ट लाइक नहीं कर रहा है और GPU टर्बो बूस्ट यूज़ कर रहा है, तो टोटल पावर 155 वाट है इस लैपटॉप की। तो इन दैट केस आइदर द CPU और GPU विल हैव द टर्बो बूस्ट at the single time। So in this case the
अगर आप देखोगे तो GPU is getting the turbo boost and there is no impact on the performance whether we get the turbo boost on the CPU or the GPU, but deep as this is GPU sensitive game, the GPU is getting the turbo boost. अगर मैं कोई ऐसा गेम लगाऊंगा जो CPU इंटेंसिव होगा तो भाई CPU ज़्यादा यूज होगा भाई। अगर ये सब प्रोजेक्टर की बात कर रहे हो 1,12,000 1,21,000 में इंटेल i9 भाई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। दी ओनली ओकाटू ब्रो मूव व्हाट ओके आई कैन मूव। अभी रेंज ब्रो मैं इसलिए मूव नहीं कर रहा हूँ कि आंसर देने पड़ते हैं। प्रांजल ब्रो यू आर सो एक्यूरेट विद द बैड बिल्ड क्वालिटी ऑफ एसर लाइक द एचपी वेक्टर्स। वैलोरेंट है नहीं कुशाल भाई, नहीं तो इतने में तो खेल ही रहता भाई, कोई इशू नहीं था, इंस्टॉल्ड ही नहीं भाई। भाई अगर 8GB रैम पहले से लगी है तो 8GB और बाय करो, 16GB विल बी मोर देन एनफ फॉर यू फॉर नेक्स्ट 2 or 3 years। Like Teji Ram bro, thank you, first of all thank you so much for joining in man, and like I think it is a good laptop, it is a good enough laptop, especially with 12650H. It's like I think it even this is a 14 core processor that you are talking about here, and with a 3050 Ti that should be 95 watt because they were shipping a 75 watt RTX 3050 Ti last year. So I think it's a good deal, Teji Rank bro. But it totally depends on the price range you are going with. I think if it is something that is costing like $100 or $150 or $200 less than the RTX 3060 laptop, it is one of the best deal that you can get. But if any of the RTX 3060 laptop is around that category, around that like budget, I think it's better to go with the RTX 3060 laptop. भाई ऋतिक भाई 80K में अगर लैपटॉप लेना है तो भाई एसर नाइट्रो 2022 वाला लो, i5 12500H और RTX 3050 वाला 95 वॉट की GPU है, उसमें भाई सिर्फ एक 8GB की रैम स्टिक और अपग्रेड करवाना है, यू विल बी रियली हैप्पी। इज इट टेरिबल? आई हैड इट्स ऑल लाइक इन एनी ऑफ द गेमिंग लैपटॉप दैट यू गोना बाय, especially at the highest possible mode, like when your fan will be like working at the highest possible speed, they will sound like a jet. भाई 80,000 के अंदर भाई कोई भी जो 6GB ग्राफिक के साथ रुतबे आ रहा है भाई तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो लैपटॉप गुड इनफ नहीं है। और मैं क्योंकि प्रोसेसर भाई ऐसा प्रोसेसर लगाया गया है दैट बिल अ बोटलनेक द 6GB GPU द RTX 3060। No issues, Teji Ryan bro. Thank you so much for asking your query, bro. It really means a lot to me that you are here and you ask your question, bro. It's a good deal path, but the main thing is that the services, the after sales service of Lenovo should be good in your area. नहीं तो कोई मतलब नहीं है 1,30,000 में लीजन लेने का, क्योंकि लीजन से बेटर परफॉर्म कर रहा है जो टफ 15 मेरे सामने है, बस थर्मल्स लीजन के बेटर है। भाई बैलो में भाई देखो, क्योंकि उसमें डुअल चैनल रैम है भाई, अराउंड 200 FPS आने चाहिए विदाउट एनी इश्यूज विद 5900HX। आई विल बी बाइंग भाई डेफिनेटली। सो सौंदर्यन एस ब्रो भाई डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट डील भाई। अगर आप भाई सौंदर्यन ब्रो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भाई लैपटॉप ले रहे हो कहाँ से, अमेजोन से ले रहे हो तो भाई लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में डली हुई उस लैपटॉप की, अगर आप उसके थ्रू ऑर्डर करोगे तो इट विल हेल्प माई चैनल आउट। आपको एक भी रुपये एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, बट अमेजोन विल पे मी सम कमीशन फॉर योर परचेज, क्योंकि आप मेरी एफिलिएट लिंक से बाय करोगे। तो व्हाट दैट विल डू भाई, ओ भाई ये क्या हुआ भाई, गिर गया भाई, FPS भी डाउन हो गया और एकदम से। तो भाई उस केस में क्या होगा कि भाई लाइक आई विल बी एबल टू बाय मैनी मोर लैपटॉप्स फॉर भाई मैंने कहाँ से मर्डर कर दिया भाई। देखो अभी आप देखो भाई कई बार क्या होता है इसी गेम में भाई, देखो आप भाई CPU सेंसिटिव हो गया। सरेंडर कर देते कोई मतलब नहीं है भाई। थैंक यू सो मच फॉर द 100 सुजीत ब्रो, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू ब्रो, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। आल्सो आई थॉट आल्सो आई बॉट A17 ऑफ योर रिकमेंडेशन, आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड। Thank you so much for the 100 Sujit bro, and like there is literally nothing in this world that can make me more happy than like reading a comment like these, that where you all are like my comments or whatever the suggestion that I have gave you is helping you all out, because
it is the only thing that for what I am here for on YouTube. जो ये मैं कर रहा हूँ भाई वो सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि I should be able to help you all out. और अगर मैं वो भाई किसी भी तरीके से अगर मैं आप लोग हेल्प कर पा रहा हूँ तो I couldn't be more happy. Thank you so much for this comment, bro, and thank you so much for the super chat, bro. It's really gonna help my channel out as well, and it will definitely help me get many more new laptops as well. So thank you so much for the 100, man. It really means a lot to me. कौन सा भाई RDR2 खेल रहे हैं यश जी गाली ब्रो भाई 51K में it's an amazing deal please भाई definitely go for it भाई it is good enough. It's an 8 core processor, so if you're not like extremely like if you don't want the best, but like if you're on a budget, 4800 is a great laptop, especially with 8 core and 16 threads. Sondar bro, definitely you can go, but like for tournament PUBG PC without any issues, bro. You're gonna get around 100 FPS. You can see my performance test video for that same game, but always remember the CPU, the GPU, like the CPU gonna run at around 90 degrees. Don't be worried about it. It is not a big deal. I have gamed, like personally, I had that laptop. My CPU was reaching around 95 degrees. I gamed on it, but there wasn't any issue where that can cause any harm to your laptop. भाई बिल्कुल पार्थ भाई बिल्कुल मैं मानता हूँ बट टफ में भाई 10 से 15% बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी आपको लीजन 5 से जो चीज़ की आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो ठीक है आप एक मॉनिटर ले लोगे भाई 6 महीने 8 महीने बाद 12,000 में जो कि हो सकता है 100% SRGB के साथ मिल जाएगा आपको एंड उसके साथ अगर आप भाई अगर आप टफ को कनेक्ट करोगे तो जो परफॉर्मेंस डिफरेंस मैं 12% कह रहा हूँ वो 20% हो जाएगा तो ऑलवेज लाइक थिंक लाइक दैट और भाई दूसरी बात अगर आप लीजन 5 प्रो की बात नहीं कर 5 प्रो की बात नहीं कर रहे हो ठीक है तो अगर 5 प्रो की बात करो तो इट इज कॉस्टिंग अराउंड 1,42,000 on Amazon. For that same price I bought the 1440p model that have DCI-P 300%. तो भाई पार्थ भाई it is always give and take. भाई अथर्व काले ब्रो जो मेरा लैपटॉप है वो लैपटॉप मैंने 1,43,000 में बाई किया था जिसमें 1440p का डिस्प्ले है और RTX 3060 है और 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले और DCI-P 300% है seriously you got Legion 5 oh my god like you guys are getting some amazing deals because from what I remember I think it was costing around like 54 or 55k when I last checked it and if you are getting it around 42k it's a really good deal bro दिव्यांश ब्रो देखो भाई देखो डिपेंड क्या करता है भाई देखो अगर आप CPU सेंसिटिव लाइक जो गेम है बैकग्राउंड CPU सेंसिटिव है तो अगर आप एक भाई इंटेल के प्रोसेसर के साथ जाओगे तो आपको बेटर FPS मिलेगा इन CPU सेंसिटिव गेम बजाय इसके कि आप भाई राइजन के साथ जाओ तो भाई अगर आपको CPU सेंसिटिव से वैलोरेंट अकेले खेलना है तो इंटेल के साथ चले जाओ तो आपको 450 FPS मिल जाएगा 12700H के साथ लेकिन अगर आपको एक भाई मतलब बैलेंस्ड लैपटॉप चाहिए तो भाई फिर डेफिनेटली राइजन बेटर है भाई सौंदर्य ब्रो भाई नहीं ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा आपका लैपटॉप जो मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंचता है वो तो पहुंचेगा ही लेकिन क्या होता है कि आप एलिवेट कर दोगे ना सरफेस को तो आपके फैंस भाई इजीली एयर को सक इन कर पाएंगे तो आपका लैपटॉप बिल्कुल भी थर्मल थ्रॉटल नहीं करेगा और दूसरी बात क्या है कि भाई आपका लैपटॉप बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाएगा अगर उसके टेम्परेचर 90 डिग्री पहुंच जाते हैं तो भाई मैं MSI देखो भाई MSI का साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है पर्सनली MSI हैज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग लैपटॉप बट MSI के जो GP और GE सीरीज को छोड़ के जो भी लैपटॉप हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं यू हैव टू रिमेंबर दैट द अदर थिंग अबाउट दोस लैपटॉप इज दैट कि MSI की सर्विसेज अच्छी नहीं है आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है पूरे इंडिया में सिर्फ मेट्रो सिटीज़ और जो टायर 1 सिटीज़ हैं उनमें अच्छी हैं तो वो ही सोच समझ के आप लोग बाय करना MSI के लैपटॉप अगर आप बाय कर रहे हो आप टायर 1 सिटी से नहीं हो तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा भाई इट्स वन अविराज ब्रो which laptop you are talking about brother which is the configuration भाई टेक शायर भाई आपने कहाँ देखा भाई वीडियो RTX 3070 वाला जितना मुझे पता है RTX 3070 भाई उसका आराम से 140 वाट तक 145 148 वाट तक भी जाएगा क्योंकि उस लैपटॉप के बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं है इसलिए आपको लग रहा है कि 80 वाट तक जाएगा कोई इशू नहीं है भाई उस लैपटॉप में दैट लैपटॉप इज़ परफेक्टली फाइन 300 वाट चार्जर के साथ जाता है तो कोई इशू नहीं होगा आपको भाई डेफिनेटली चल जाना चाहिए विदाउट एनी इश्यूज अगर भाई ऐसा किया तो डेफिनेटली गो फॉर लीजन 5 प्रो भाई लाइक इट्स नॉट अ इशू देखो भाई देखो बात ये रहती है कि इट डिपेंड्स अ लॉट
लॉट ऑन की भाई आप किस पार्ट में हो। अगर भाई आप मुंबई में आप कोई भी लैपटॉप खरीद लो, इवन MSI का लैपटॉप खरीद लो, इवन आई थिंक एट 1.2 लाख यू मिस द डील एट 1.229 lakh if you are from Mumbai you should have bought the MSI GP66 laptop. It would have lasted you for 6 or 7 years because it have RTX 3070 and it can beat Legion 5 Pro on any given setting with even with its RTX 3060 and with 3070 it will beat the Legion 5 I Pro that you have bought by around 30 or 40%. With optimal disable, I just want to see if the GPU can adjust monitor settings. Like, I will just I was not able to understand. I think I can, even with optimal disabled, I will be able to open up the, because I am on the dedicated GPU, so I will be able to open up Nvidia control panel without any issues. Legion 5 भाई मस्त रहेगा भाई, जो 4600H और 1650 वाला आप बाय कर रहे हो मुनावर ब्रो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट डील दैट यू कैन गेट। भाई अगर डिपेंड करता है किस प्राइस में मिल रहा है सनत सोनी ब्रो, अगर आपको 1 लाख से ऊपर मिल रहा है तो भाई उससे बेटर है कि आप Asus TUF A15 5900HX और RTX 3060 के साथ जाओ, वो बहुत और ज़्यादा बेटर फ्यूचर प्रूफ है। नो इशूज पार्थ भाई। भाई इट लाइक देखो पार्थ भाई, लाइक सीरियसली होपफुली आपको मेरी बात गलत नहीं लगी हो। देखो भाई मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि बिकॉज भाई देखो आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल सिटी नेम गाडरवारा, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश भाई। तो बहुत ज़्यादा छोटी सिटी है भाई, यहाँ इवन एक भी डेडिकेटेड गेमिंग शॉप नहीं है। तो आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू बाय द लैपटॉप कि आपके पास या आसपास बेस्ट रिसोर्सेज नहीं होंगे जहाँ से आपको सर्विसेज मिल पाएँ। तो उस हिसाब से आपको वो चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी जिसमें आपको कम हैशल हो, जिसमें कम टेंशन हो। 80K तक बेस्ट लैपटॉप, अगर भाई आप 5,000 और खर्च कर सकते हो मेंबर भाई, तो ACER NITRO 5 2022 लो, i5 12500H RTX 3060 वाला, उसमें 3000 की DDR4 रैम लगाना। अगर वो नहीं कर सकते हो और 80K से 1 रुपये भी ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हो तो A15 ले लो, 75K में जो आ रहा है 4800H और RTX 3060 वाला, यू विल बी रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। Ryzen 5 भाई नहीं मिल सकता भाई, Legion 5 भाई जो आप बोल रहे हो ना भाई, जो अगर 12 जनरेशन वाला बोल रहे हो वो नहीं आएगा 1 लाख भाई। इवन लास्ट ईयर के लीजन की इस साल परफॉर्मेंस डाउन नहीं हो पाई है भाई। Globro, it will be tough to build a full setup with RTX 3060 because 3060 alone cost around 45K. Like it will be extreme tough. You should at least have 1.2 lakh, around 1 lakh to 1.2 lakh. भाई मैं फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एक्सटेंशन प्रो, तो भाई मुझे प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आता है। नहीं मिल पाएगा शुभम भाई, रावत भाई। शुभम Legion 5 आई प्रो 11 जनरेशन की बात कर रहे हो तो शायद वो 1,35,000 या 1,40,000 मिल जाए। जो i7 12700H है वो नहीं मिल सकता भाई, विदाउट एनी डाउट नहीं मिल सकता। टफ इज 100 टाइम्स बेटर देन पवेलियन की बिल्ड क्वालिटी कहीं आसपास भी नहीं आती टफ के भाई। आई थिंक सनत भाई 1,000 ज़्यादा खर्च करो और भाई Asus TUF A15 ले लो, 1500 RTX 3060 वाला, वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ है भाई। सबसे बेस्ट लैपटॉप वही है उस प्राइस रेंज में, 1 लाख से नीचे। 3050 भाई 2 या 3 साल के लिए काफ़ी है, उसके बाद लेकिन यू विल हैव सम इश्यूज़ क्योंकि VRAM का यूसेज बढ़ जाएगा इन फ्यूचर में। अभी 4GB से ऊपर तो ईजिली ही यूज़ करते हैं लोग, तो इन फ्यूचर तो भाई और ज़्यादा ही यूज़ करेंगे लोग। भाई लैंग्वेज ज़्यादा नहीं सीखो भाई, अगर आपको पाइथन C++ जावा आता है भाई, डेवलप एप्स थ्रू दैट, मेक एप्स, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल भाई। लोगों की हेल्प आउट करो, जो दुनिया में प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो आपकी प्रोग्रामिंग। तो दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग एवरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अगर आप पाइथन C++ जावा सीख रहे हो, जावा में कुछ एप्स बनाओ, पाइथन में कुछ एप्स बनाओ, C++ में कुछ एप्स बनाओ, इट विल हेल्प यू आउट मच मोर। सो गाइस देखो भाई, गाइस आई हैव बीन स्ट्रीमिंग फॉर ओवर आई थिंक ओवर 2 आवर्स नाउ। तो भाई सिर्फ देखो अब मैं लाइव स्ट्रीम एंड करने वाला हूँ, तो भाई देखो कुछ छोटी सी 2 या 3 रिक्वेस्ट रहेंगी। सबसे पहले तो मुझे लाइक्स देखने मिल, तो वी आर एट 135 लाइक्स। तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किया है तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा गाइस, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो लाइक बटन को हिट कर रहे हो, जैसे कि हम लोग 150 लाइक्स तक पहुँच जाएँ इस लाइव स्ट्रीम को एंड होते होते। ठीक है, पहली बात तो ये गाइस। दूसरी बात गाइस, ये चीज़ लाइक मैंने लास्ट लाइव स्ट्रीम से करना स्टार्ट किया गाइस कि आई सीरियसली डोंट वांट यू गाइस टू लाइक donate me anything directly, like do a super chat for me, because I totally understand that it is your parents' money for the students who are watching my live stream, that it might not be feasible for you to
प्रांजल भाई मैं अब भी दिखा रहा हूँ OSD दिखा रहा हूँ कि इट विल नॉट बी फीजिबल फॉर यू टू बाई टू डोनेट मी एनीथिंग। तो गाइस अगर आप कोई भी लैपटॉप खरीदते हो ऑनलाइन भाई, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में हो या ना हो, या फिर कोई और चीज़ खरीदते हो अमेजोन से, तो गाइस आप एक चीज़ कर सकते हो कि मेरी वीडियो को ओपन किया करो, उसकी वीडियो में लिंक रहती है अमेजोन की, उससे आप अमेजोन को ओपन किया करो, उसके बाद चीज़ों को परचेज़ किया करो। उससे क्या होता है भाई कि जो मेरी लाइव स्ट्रीम लाइक जो भी अमेजोन है आप लोग, क्योंकि मैं अमेजोन पे आपको रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे एक एफिलिएट मार्केटिंग फ़ी देता है अमेजोन, एडवर्टाइजिंग फ़ी देता है, जिसके थ्रू लाइक आप लोगों को एक भी रुपये ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा ना, अमेजोन बिल पे फ्रॉम देयर एंड ओनली। आप जो भाई नॉर्मली पे करते वही पे करना पड़ेगा अमेजोन को। और व्हाट डज दैट विल डू इज कि भाई इट विल हेल्प मी आउट to buy many more laptop for the channels and to help you out one way or the other. So like that is my humble request to you guys. And guys तो अगर भाई इसके सिवा guys I will just say one more thing, भाई मेरे पहले चैनल कंटेंट को देखो, if you think कि भाई my content is worthy enough for your subscription, you like I will be more than happy to have you as part of my family, YouTube family. और अगर भाई आपको लगता है नहीं लगता कि भाई इट इज़ गुड इनफ, तो भाई आई विल जस्ट से कि भाई इट्स ओके, यू कैन डिसलाइक द वीडियोस, यू कैन सजेस्ट मी कि भाई मैं क्या बेटर कर सकता हूँ वीडियोस में जो आप लोगों के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो भाई अब आते हैं प्रांजल भाई की बात पे। प्रांजल भाई ने हमसे पूछा है कि जो हमारा OSD है लाइक MSI का, वो कैसे क्या है उसका। एक मिनट रुको भाई मैं दिखा देता हूँ, मैं डिस्प्ले कैप्चर ऑन कर लेता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। तो लेट मी फर्स्ट टर्न ऑन द डिस्प्ले कैप्चर। तो भाई ये हो गया डिस्प्ले कैप्चर अनेबल्ड, ठीक है। डिस्प्ले कैप्चर के नीचे जाते हैं हम, अब ये हो गया भाई हमारा ये। और MSI का भाई देखो, ये MSI आफ्टर बर्नर ओपन है, ये है ओपन। तो इसमें भाई कुछ मैं इस तरीके से सेटिंग करके रखा हूँ भाई मॉनिटरिंग की, GPU 2 का यूसेज, GPU 2 का टेम्परेचर, GPU 2 की मेमोरी क्लॉक, कोर क्लॉक, ये सब OSD में है भाई, ठीक है। और उसके बाद फिर ये नीचे सेटिंग्स हैं, कुछ सेटिंग्स मैंने भाई H1 इन्फो के थ्रू भी इंपोर्ट की हैं, ठीक है। ये यहाँ पे H1 इन्फो है, तो H1 इन्फो से भाई देखो मैं 3 चीज़ ले रहा हूँ, CPU कोर, CPU पैकेज पॉपर, CPU जो भाई लाइक क्लॉक फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि इसमें सिंगल कोर की फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है, कुछ इशू है लाइक H1 इन्फो के साथ कि भाई लाइक सारे 8 कोर्स की फ्रिक्वेंसी नहीं दिखा पा रहा है मुझे। तो इस वजह से मैंने CPU की फ्रिक्वेंसी इसलिए मैं इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि सिंगल कोर की फ्रिक्वेंसी ऊपर नीचे होती रहती है। अगर पूरी 8 कोर की मिलती तो मैं उसको वीडियो में आप लोगों को दिखाता, ठीक है। तो भाई ये हो गया ये। और उसके सिवा अगर आपको मेरी यहाँ की सेटिंग देखनी है, तो भाई देखो ये मैं लाइक यहाँ मिडिल टाइप में ये करके रखे हूँ। उसके सिवा भाई जो मैं फ़ॉन्ट्स यूज़ करता हूँ वो GeForce के फ़ॉन्ट्स हैं। और भाई देखो यहाँ पे लाइक ऑन ऑन डिस्प्ले स्क्रीन के पीछे ये यहाँ पे जो है पैलेट, उसको मैंने यहाँ ब्लैक कलर का सेलेक्ट कर रखा है, पहले वाले पे क्लिक किया उसके बाद ब्लैक कलर सेलेक्ट कर रखा है। तो भाई ये है, और ये ऑन एंड ऑफ का वो रखे हुए हैं भाई, ये सब सेटिंग्स है। होपफुली प्रांजल भाई ये हेल्पफुल, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। 5600H भाई डेफिनेटली भाई 5600H बेटर है अगर आप एक टाइट बजट पे हो। फनी बाइंस ब्रो, फनी बाइंस ब्रो, ये सिस्टर जो भी हो आप, क्योंकि आई थिंक सिस्टर की फ़ोटो है भाई। 140 बॉट भाई 20% डिफरेंस है भाई, 20-25 डिफरेंस है, परसेंट डिफरेंस है 1080p गेमिंग पे, 30-35% डिफरेंस है भाई 1440p गेमिंग पे सौंदर्य ब्रो। तो 140 बॉट बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई 95 बॉट के कंपेरिजन में। स्पेशल टफ A15 में मक्स स्विच भी मिल जाता है 140 बॉट वाले मॉडल के साथ आपको। So guys, good night Pranjal bhai. Thank you so much for joining in everyone. Thank you so much for all your support. Like it really means a lot to me that you all are here. You supported my content. We are still 4 away from hitting 150k, 150 likes on this video. But whatever it is, hopefully you guys will do that once I end the live stream. Thank you so much for that. Thank you so much for joining in everyone. Tag Anthem, good night bro. Parth bhai, good night. Pranjal bhai, good night, and good night to each and every one of you. I think 56 people are watching my live stream at this point. So thank you so much for joining in guys. कल मैं फिर live stream करूँगा hopefully, and hopefully I will be able to help you out a lot again. So thank you so much for everything guys. एंड थैंक यू भाई तशन भाई, कल हेल्प आउट करने की कोशिश करता हूँ भाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गाइस, यू हैव बीन एन अमेजिंग ऑडियंस एंड यू गाइस जस्ट सपोर्ट मी सो मच। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, बी हेल्दी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच वन ऑफ यू। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन एंड प्राउड टू बी बॉर्न इन दिस कंट्री। मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ और मैंने भारत में जन्म लिया। तो हैव मैनी
like congratulations to all of you on an auspicious occasion of Independence Day. So guys, अभी के लिए मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूँगा, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में. हम दोनों ने 150 लाइक्स भी टच कर लिया. So thank you so much for that. Thank you sir. Thank you so much guys. Good night. Love you all. Bye bye.